Check. Check. Yes. Yes. Very good morning, my dear friends. Sir, good morning, sir. वंडरफुल. कैसा हो गया 2 दिन? एकदम मस्त. सारे सब्जेक्ट्स मजा आ गया. लॉ, टैक्स, अकाउंट्स और देखो कितना अलग अलग कॉम्बिनेशन है. एक बंदा बोलता है कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट से ज़्यादा, और एक बंदा सुबह सुबह आते बोलता है आपका कॉस्ट से लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है. और अकाउंट्स का फैकल्टी आके बोलता है तेरे को कॉस्ट करना है, प्रॉफिट करना है, जो करना है कर, उसका अकाउंटिंग एंट्री बराबर पास कर. करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स. एंड लॉ का बंदा आके बोलता है कि बॉस वॉट एवर यू वांट टू डू यू डू, कॉस्ट प्रॉफिट एंट्री वो सबसे लेना देना हमको कुछ है नहीं, फॉलो द लॉ परफेक्टली. बोर्ड मीटिंग इधर करने की जगह उधर गया तू गया. करेक्ट. Exactly. So that's where you learn your corporate and other laws. So institute has been so planned that आपका CA इंटर सिलेबस इतना beautifully plan किया वो लोग that it will cover holistically all the angles of a work what chartered accountant does. So that's where all different subjects have been brought at one platform, which actually makes a lot of sense for you and gives you a right base for your CA final also. That is something very interesting. You have to appreciate that one way. At the same time, you also have to accept that ठीक है फाउंडेशन में तो 4 सब्जेक्ट थे, अब तो 8 सब्जेक्ट है, उसका लेवल अलग है, इसका लेवल अलग है, कंपेयर नहीं कर सकते. जो एफर्ट वहाँ पे ले, जो एफर्ट यहाँ पे ले, डेफिनेटली फर्क है, तो उस हिसाब से हम लोग एफर्ट लेना पड़ेगा. करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स. Right. So last 2 days we have spent some very good time on discussion about lot of interesting basics. Yesterday we covered very beautiful concept where we discussed about how the entire process of income tax works. And I'm sure we are clear with the process of income tax. Everybody, what is step number 1? Determine residential status. Very soon that is the second chapter what we are going to start learning. Yeah. Next, step number 2. Ascertain the income and classify the income into 5 heads of income. Correct, my dear friends? Are bolo beta. What are the 5 heads of income? Salaries, house property, PGBP, capital gains, income from other sources. These are the 5 heads of income. And when we combine all the 5 heads of income, what do we get is called gross total income. What do we call it? Gross total income. From the gross total income, what do we reduce? Deductions under chapter 6A. 6 is? Excellent, full clarity is there. So deduction of chapter 6A. Balance, what we get is called total income. Ultimately, we calculate tax on what income? Total income. That is the income on which we calculate tax. Are we getting clarity? And I clearly told you that deductions का मतलब ये नहीं कि आपको जो मन में है वो deductions कर देंगे. Act has clearly given that there are some set of section in which there are some set of condition which needs to be satisfied. If they are satisfied, you will get the deduction. Now, what are those cases of deductions and all? We will talk in detail when I go to deductions chapter. But some interesting points I'll tell you today also. Are we clear, everybody? Right, very good. Then, my dear friends, tell me how many pillars are there for democracy? ये एग्जाम में आएगा? हाँ, बिल्कुल भी नहीं आएगा. But 5 sources of income tax लो आ सकता है. What are 5 sources? Income Tax Act 1961, Income Tax Rules 1962, Annual Finance Act, Circulars and Notification, Judicial Pronouncements. What is CBDT full form? And Judicial Pronouncements means rulings given by High Court or Supreme Court. Getting clarity, everybody? Speak out. Exactly. Is every assessee a person? Yes. Is every person an assessee? Exactly, not necessarily. But every assessee will definitely be a person. What is section 27? Assessee. 29? Wonderful. 231? Person. Section 4? Chargeability section. Bolo beta, kya hai chargeability section? Income earned by an assessee in the previous year is chargeable to tax in the assessment year. Income earned by an assessee in the previous year is chargeable to tax in which year? Exactly. Are we clear with that point, everybody? All of us? Right. Now listen to an interesting point here. Please listen carefully. What is the whole story we are trying to understand? Now,
is there a difference between revenue receipt and the word capital receipt? दोनों में कुछ फर्क है क्या? क्या है बेटा फर्क? Sorry? Revenue receipts are recurring in nature. Okay, very good. What about capital receipts? Example for capital receipt. Purchase. Sale. अरे हम खरीदे तो पैसे गया ना यार. Sale of an asset will come under capital receipt. Revenue receipt example. Rental income, teaching income, salary income. They are all called as what? Revenue receipt. Receipt की बात कर रहे हैं, payment की बात नहीं कर रहे हैं. Revenue expenditure अलग है, revenue receipt अलग है. Correct, my dear friends? Now, an interesting concept is there, which is technically known as the golden rule of income tax. Come on, what do we call it, my dear friends? Golden rule of income tax, which clearly says all revenue receipts are taxable. All revenue receipts are taxable unless specifically exempt. Unless specifically exempt. Whereas all capital receipts are exempt unless specifically taxable. Now let me tell you, अभी डाउट आएगा दिमाग में, सर एग्जाम्शन का मतलब क्या है, डिडक्शन का मतलब क्या है? कल तो आप बोले डिडक्शन डिडक्शन और आज बोल रहे एग्जाम्शन एग्जाम्शन, फर्क क्या है? एग्जाम्पल आई टेल यू. exempted incomes are those incomes, बेटा सुनो, exempted incomes are those income which will not form part of your total income. Which will not form part of your total income. Deductions are those which we reduce from gross total income. फर्क समझ में आया सर? I'll give a small example. Shiva Teja has got about 20 lakhs income. Out of 20 lakhs income, I paid 1 lakh life insurance premium. Can I reduce that life insurance premium as a deduction? Under some section I can take it. Which section? What? We'll talk in detail. So I'm not going to pay tax on 20 lakhs. I'm going to pay tax only on 19 lakhs. Do you agree to that? I'm not going to pay tax on 20 lakhs. I'm going to pay tax only on 19 lakhs. Do you agree to that? Exactly. Now let me give a small example here so that you get a clarity. What is that? Please listen. So for example, there is some bomb blast happened. Happened in Pune once upon a time? No idea? In Pune, once upon a time there was a bomb blast also. Now I have a question. Okay. किधर हुआ क्या हुआ छोड़ दो. Now question ये है, bomb blast has happened in one particular bakery. Now coming back to discussion, when a bomb blast happened, government gives compensation. Government gives compensation. अरे आते हैं यार लोग टीवी में, हम बहुत फील हो रहे हैं, ये सब हो गया, गवर्नमेंट की तरफ से हम हर फैमिली को 5 लाख रुपए देंगे. देंगे नहीं देंगे अलग बात हो गया, बट डायलॉग तो बोलेंगे ना यार. अज्यूम करो 5 लाख दे दिए. क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? Is that 5 lakh? Is that 5 lakh an income for the family members? Sir, Mr. X died. Who has died? Mr. X. How did he die? Bomb blast. And government has given him what? Compensation. Him matlab his family members. अरे उसको कहाँ से देंगे यार? गया already टपक गया. Is that clear, my dear friends? So X family members has got compensation from the government. Getting my point, everybody? I repeat again, X family members have got compensation from the government. Now my question to you, is that compensation an income or not? Bolo. Law said definitely it's an income. Anything coming is an income. But it is exempt. But it is exempt. We have got one section in income tax known as section 1010 BC, which says that whatever compensation is received on account of disasters, that amount is completely exempt. So are we clear with that? Everybody? और एक example दूंगा सर अभी. We know MPs, MLAs. Yeah? What do you think is the MLA salary, sir? MLA को salary मिलता है? या अपने आप कमा लेता है, देख लेता है अपने आप का खाना पीना बस. वो अलग बात है, मतलब लीगली बात करते हैं हम. MP को कुछ salary आता है सर? Officially he gets some salaries. Officially he also gets some allowances and benefits. Correct, sir? Income tax says salary is taxable, but allowances and benefits are exempt. वो benefit है या नहीं है? अरे उसको गाड़ी दिए यार, वो गाड़ी benefit ही नहीं है उसके लिए. अरे imagine करो यार, एक MLA है, कोई भी पार्टी का हो, उसको एक फॉर्च्यूनर गाड़ी दिए, ड्राइवर दिए, सब दिए,
उसको कुछ फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है? अरे पेट्रोल का खर्चा नहीं है, गाड़ी का खर्चा नहीं है, ड्राइवर का खर्चा नहीं है, पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड का खर्चा नहीं है, सब कुछ गवर्नमेंट ने दे दिया, उसको कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ? स्पीक आउट सर. बट इनकम टैक्स इज दैट इज exempt. You are getting my point? Exempted incomes are those income which will not form part of your total income. Deductions are those which we reduce from gross total income. सर समझ में आ रहा है सर? एवरीबॉडी माय डियर फ्रेंड्स. सो जब हम टोटल इनकम का कंप्यूटेशन बनाएंगे, जो भी इनकम एग्जाम्प्ट रहेगा वो टोटल इनकम कंप्यूटेशन में आएगा ही नहीं. बट जो डिडक्शन का कहानी है, हम ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करके उसमें से डिडक्शन माइनस करते हैं. यू आर गेटिंग माय डिफरेंस एवरीबॉडी? सो स्पीक आउट. सो लेट मी गिव अ स्मॉल एग्जांपल हियर. Let's say one person, Mr. A, this gentleman has got 20 lakhs income and 1 lakh he paid life insurance premium. What did he pay? Life insurance premium. And in that 20 lakhs income, assume for a second 5 lakhs is exempt. Under some section it is exempt. Under some section that 5 lakhs is what, sir? Exempt. Assume for a second that 5 lakhs is exempt under some section. Now when you do the computation, what will be the GTI? GTI will take it as only 15 lakhs. And from that, we will take deduction 1 lakh. And total income becomes 14 lakhs. फर्क समझ में आ रहा है सर? बेटा बोलो बेटा. Are you getting the difference, my dear friend? The difference, one last time let me tell you, my dear friends, exempted incomes are those which will not form part of your total income. But deductions are those we reduce from gross total income. So getting clarity, everybody? Speak out, my dear friends. Chalo, put side heading. Golden, okay. One small definition I'll give you. Listen first. When I spoke about this word golden rule of income tax, I clearly told you one point that all revenue receipts are taxable unless exempt. Beta bolo beta, come on, participate. All revenue receipts are taxable unless exempt. All capital receipts are exempt unless taxable. मतलब अगर कोई भी इनकम आता है, अगर रेवेन्यू नेचर है, वो पक्का टैक्सेबल है unless it is covered by exemption. अगर कैपिटल रिसिट आता है वो हमेशा exempt है unless it is specifically made taxable. Getting clarity on this point, everybody? All of us? Now I'll give a small example. That language only we'll write in the book also. But first listen to me, then we'll write. We will not going to write revenue recurring in nature, capital asset भेजे तो आ जाता है, ये सब local language है. But what we are going to write is something like this. Listen. Shiva Teja has got one house. Has got one? I gave the house on rent. I gave the house on revenue receipt or capital receipt? Speak out, guys. Is rental income a revenue receipt or capital receipt? Rental income is definitely a revenue receipt. I sold the house. Capital receipt. इधर तक समझ में आया ना सर? What we say is revenue receipt is such receipt which is earned from the asset. Which is earned from the asset. Capital receipt is that receipt which is a kind of a compensation for sterilization. For what, sir? Sterilizing means losing. For sterilization of a profit earning source. वापस बोलूंगा सुनो. Compensation received for sterilization. Gain asset of what, sir? Profit earning source. अगर asset से कुछ पैसा आता है उसको हम बोलते हैं revenue. Asset बेच से कुछ पैसा आता है उसको हम बोलते हैं capital. Because profit earning source is only gone. सर source से कुछ पैसा आता है उसको क्या बोलेंगे हम? Revenue. Source ही गया उसको क्या बोलेंगे हम? Capital. So getting my point? If I have got one machine, I gave the machine on rent. Whatever I get is what? Revenue. Machine मैंने बेच दिया. What do you call it? Capital. Are we clear with this point, everybody? So speak out, my dear friends. All of us. Now I'll tell you something interesting, more for your knowledge. ये लिखेंगे नहीं हम लोग. But सुन लेना ये कहानी. Next 2 minutes, whatever I'm telling will not come in exam, but only for your knowledge. Listen just. Will not write in the book also, but just listen. Sir, there is one person A. ठीक है? This gentleman is a manufacturer of pens. Manufacturer of pens. This man has got order for
10,000 पेन्स. कितने पेन का ऑर्डर आया इसको? 10,000 पेन्स बनाने का उसके पास ऑर्डर आया. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स. बट उसके पास जो मशीन है उसमें सिर्फ 2,000-3,000 पेन्स बनते. सो व्हाट दिस जेंटलमैन हैज डन इज फ्रॉम बी he wanted to buy a within 10 days. My purpose is gone. So I definitely want the machine within how many days, my dear friends? 10 days. Who told like this to whom? A told to B that he want the machine within 10 days. Very clearly he told 10 दिन के अंदर मुझे ये machine चाहिए ही चाहिए. Clear? And if you don't give the machine to me within 10 days, you have to pay me a compensation of 10 lakhs. Example I'm telling. Who told you to whom? A told to B. What did he say? 10 दिन में अगर machine देगा बेटा तो ठीक है. अगर नहीं दिया, you have to pay me compensation of 10 lakhs. Because तेरी वजह से मैं ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा. अरे बराबर यार. स्पीक आउट. अगर तू 10 दिन के अंदर मुझे मशीन नहीं देगा तो मैं ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता. ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करूंगा तो मेरा लॉस गया. एंड इफ यू डोंट गिव द मशीन विद 10 days, I will ask for compensation of 10 lakhs. And Mr. B failed to deliver machine within 10 days. 10 दिन के अंदर मशीन दिया नहीं तो एक का फटका लगा. बोलो यार, एक ही तो वाट लग गई ना यार. ये चुप बैठेगा क्या? A will demand for what? Compensation. How much? And B paid compensation of 10 lakhs. B paid. Now my question to you is that compensation a revenue receipt or capital receipt? आपको क्वेश्चन आया समझ में मेरा? सर ये मशीन टाइम पे डिलीवर नहीं किया, उसकी वजह से बी को ए को कॉम्पेंसेशन देना पड़ा. अभी ए के हाथ में कॉम्पेंसेशन आया. नाउ माय क्वेश्चन टू इज दैट कॉम्पेंसेशन व्हिच ए गॉट, इज इट रेवेन्यू और इज इट कैपिटल? दैट इज माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू. हाँ सर, कैपिटल, रेवेन्यू. What happened is this matter was picked up by income tax officer. Technically we call him as assessing officer. सर हम assessee है तो वो क्या बनेगा? assessing officer. इनकम टैक्स ऑफिसर का नाम क्या है बेटा? assessing officer. अब जीएसटी में जब जाओगे वहां पे वर्ड सुनेंगे प्रॉपर ऑफिसर, बट इन इनकम टैक्स वी यूज द वर्ड assessing officer. What do we call him? And I don't think it is difficult to remember this because when we are assessee, he is obviously assessing officer. Okay, I thought some doubt. Okay. Now, the point what I want to discuss here is, assessing officer told this is revenue in nature. Please pay tax. अगर revenue तो tax लगेगी ना यार. Capital है तो नहीं लगता है, revenue तो लगेगा ना compulsory. Assessing officer ने बोल दिया भैया ये revenue है तू tax भर. This fellow was not happy. He went and filed an appeal. So we can go for next level and file appeal. He went and filed appeal before somebody called CIT appeals. Commissioner of Income Tax Appeals. You're getting my point? All this will come in CA final for you. But more for knowledge I'm telling you so that you will understand exactly how the system is working. Clear? Who went for appeal? Assessee went for appeal. Obviously because वही तो कुछ नहीं है ना यार. अगर वो कुछ है तो वो क्यों जाएगा अपील पे? वो बंदा गया CIT अपील के पास. CIT अपील बोल दिया this is capital in nature, enjoy. अब ये खुश हो गया, ये खुश हो गया, but who's not happy? उसका ईगो तो हट हो गया यार. He went for next level appeal. That is called income tax appellate tribunal. क्या बोलते बेटा? Income tax appellate tribunal. ये एग्जाम में नहीं आएगा, ऑलरेडी मैंने बोल दिया एग्जाम में नहीं आएगा, लिखाऊंगा भी नहीं मैं. टाइम पास करना ही करना, टाइम वेस्ट नहीं करना आपका. करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स? बट समझना बहुत जरूरी है, नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज. क्लियर? सो हु वेंट फॉर आईटेट? असेसिंग ऑफिसर. असेसिंग ने गया क्या? तो इस कॉन्सेप्ट के बाद आपको क्या समझ में आया? हु कैन गो फॉर अपील? Either assessee can go for appeal or assessing officer can go for appeal. Technically we say that department went for appeal. You're getting clarity on this point? ये सब knowledge आता है example से. That's why I'm giving that example. He went to ITAT. ITAT told capital in nature. ITAT told what, sir? Who is happy? Assessee. Then that fellow didn't keep quiet. He again went to High Court. सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते यार, ट्रिब्यूनल के बाद कहाँ जाते? कौन गया? असेसिंग ऑफिसर. हाई कोर्ट ने फिर बोल दिया भैया दिस इज कैपिटल इन नेचर. इसका ईगो फिर हट हो गया. किसका? असेसिंग ऑफिसर. ये किधर गया?
सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोल दिया भैया ये कैपिटल इन नेचर है. Supreme Court gave a ruling saying that it is capital in nature. Now tell me, can you go anywhere now? He just accepted the case and closed the matter. Now what basis Supreme Court told it is capital in nature? Supreme Court told here compensation is not based on revenue what he lost. Compensation is not based on order what he lost. Compensation is getting because he did not get the machine on time. So compensation is linked to the asset. When it is linked to the asset, it is capital in nature. Because compensation received for sterilizing, that is what? Losing a profit earning source is a capital in nature. Then the Supreme Court gave ruling. This fellow ego hurted still, but he kept quiet. Because Supreme Court is the apex court, उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर सकता. समझ में आ रहा है सर? Everybody getting clarity? ये एग्जाम्पल से आपको क्या क्या समझ में आया बोलो. एक तो पहले ये समझ में आया कि डिपार्टमेंट अपील जा सकता है, हम भी अपील जा सकता है. जब हमारा नाम असेसी है तो उसका नाम असेसिंग ऑफिसर है. तो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे विल गो टू कमिश्नर, देन दे विल गो टू ट्रिब्यूनल, देन दे विल गो टू हाई कोर्ट, देन दे विल गो टू सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट में भी गया तो काम गया. क्लियर? अगर इमेजिन करो हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट को फेवरेबल दे दिया, टेलिंग वो रेवेन्यू है बेटा टैक्स कलेक्ट कर, कैन असेसी गो टू सुप्रीम कोर्ट? यस, हु विल स्टॉप? जब हम खुश है तो जाएंगे नहीं. जब हमको लगता है अरे यार ये कुछ गड़बड़ है मुझे जाना ही पड़ेगा तो जाओ ना यार. अब आप पूछ सकते हैं जाने के लिए प्रोसीजर क्या है, आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे वो सब. व्हाट इज द प्रोसीजर टू गो फॉर अपील, व्हाट इज द फीस यू हैव टू पे, वो सब प्रोसीजर फाइनल में है. सर सब कुछ अभी पढ़ेंगे तो फाइनल में क्या पढ़ेंगे? So getting my punch? Clear? I'm not going to make you write about CIT appeals, tribunal, ये सब लिखने वाला नहीं हम लोग. बट दो ही चीज लिखने वाले हम लोग. रेवेन्यू रिसिट का मीनिंग क्या है, कैपिटल रिसिट का मीनिंग क्या है, और वो गोल्डन रूल क्या है. क्लियर है? वो तो समझना जरूरी है ना यार. वो अपने सिलेबस में भी अपने को मालूम भी पढ़ना चाहिए. आर वी क्लियर विद दिस पॉइंट एवरीबॉडी? ऑल ऑफ अस स्पीक आउट. नाउ आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन. ओके, लेट मी टेक एन एग्जांपल लाइक दिस. ओके सर, क्या दूं? Let's say there is one ex-faculty. Some ex-faculty is taking classes. Okay? He is getting revenue from classes. He is getting income from classes. Revenue or capital? He is getting income by taking classes. What do you call it? हमें आंसर ही बोल दिया already. समझो some Y faculty came to ex-faculty and told him, भैया तू एक काम कर, तू टीचिंग बंद कर, मैं तेरे को 2 करोड़ रुपए दूंगा, घर जा आराम कर. ना? Capital, because he lost a profit earning source. Clear? अब सबको समझ में आ गया? सर क्लियर है ना सर? पक्का क्लैरिटी है सबको? चलो अब लिखते हैं. चलो स्टार्ट. पुट साइड हेडिंग गोल्डन रूल ऑफ इनकम टैक्स. गोल्डन रूल ऑफ इनकम टैक्स. गोल्डन रूल ऑफ इनकम टैक्स. Golden rule of income tax. लिखो नीचे. All revenue receipts are all revenue receipts are receipt नहीं बोलते उसको, receipt ही बोलते. हाँ प्लीज. All revenue receipts are taxable. All revenue receipts are taxable unless specifically exempt. Unless specifically exempt. All revenue receipts are taxable unless specifically exempt. Clear? बेटा समझ में आया? Full stop. Continue. Line change मत करो, continue करो. All capital receipts are all capital receipts are what sir? Exempt. All capital receipts are exempt unless specifically taxable. All capital receipts are exempt unless specifically taxable. क्या क्लियर है? समझ में आया बात? नीचे लिखना एक बार. नेक्स्ट लाइन यू राइट वन नोट. Write one note.
exempted incomes are given under 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 section 10. Which section beta? 10. In that we have got 10.1, 10.2, 10.3, 10.4. Is it 10 subsection 1, 10 subsection 2? Logic apply करो. Clause. Because 10.1 का 10.2 का कोई लिंक नहीं है. अरे ऑलरेडी बता दिया मैं आपको. जब दोनों का लिंक होता है उसको हम बोलते हैं सबसेक्शन. लिंक नहीं है तो क्या बोलेंगे हम? क्लॉज. शायद ये चीज आप लॉ में भी पढ़े होंगे. या एनीवेज क्या लिखे आप लोग? exempted incomes are given under section 10. Next line write down. Note 2 लिखना. Exempted incomes are those incomes. Exempted incomes are those incomes. Exempted incomes are those income. Exempted incomes are those incomes which do not form part of total income. Exempted incomes are those incomes which do not form part of total income. Exempted incomes are those incomes which do not form part of total income. Whereas deductions are those deductions are those which are reduced from gross total income. Correct? Deductions are those which are reduced from gross total income and are given by chapter क्या सर 6A. 6 is what 6? Exactly. So almost we have got about 298 sections in income tax. I didn't tell you all that because 298 sections से क्या करेंगे समझ के अभी 298 sections सिलेबस में तो उतना है नहीं. आपके सिलेबस में hardly there are about 60-70 sections. In final you have got about some another 60-70 sections extra.
any case is interpreted based on the particular facts and circumstance of the case. Because हर केस का डिसीजन एक ही जैसा नहीं होता है, क्योंकि हर केस में कुछ ना कुछ फैक्ट्स अलग रहता है. ऑन दैट फैक्ट्स ओनली वी विल गिव द डिसीजन. यू गॉट माय पॉइंट. एंड अपना व्यू अलग होता है, कोर्ट का व्यू अलग हो सकता है. Correct? No, because everyone does not view in the same manner, right? Everyone has got their own set of viewpoint how they see it. Friends, correct? You're getting my point, everybody? So everyone has got a different viewpoint how they're going to see it. तो क्लैरिटी आ जाएगा. That exempted income will not form part of total income. Okay, बेटा हो गया ना. assessing officer. Done. ठीक है, thank you. Yes, बच्चों क्लियर है? What is golden rule of income tax? बोलो. All revenue receipts are taxable unless specifically exempt. All capital receipts are exempt unless specifically taxable. आज के बाद हम बोलेंगे क्या? कैपिटल बोले तो कभी कभी आता है, रेवेन्यू तो हर रोज आता है. अरे ऐसा लिखेंगे ना यार, 1 मार्क नहीं आता है एग्जाम में, बिकॉज दैट लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू कांट राइट रेवेन्यू रोज आता है, कैपिटल कभी कभी आता है. दैट लैंग्वेज विल नॉट गेट यू मार्क्स. Are we clear with this point, everybody? Speak out. Now I have an interesting concept. Listen very clearly, then we'll proceed. And yesterday we already discussed about the tax rates for individual. याद है? Normal tax rate for individual. Special rates we did not talk. Normal rates only we discussed. बात क्लियर है ना हम लोग? क्या है सरचार्ज का रेट? क्या है बेटा? 10, 15, 25, 37. More first category is what? More than 50 lakhs does not exceed 1 crore. Second, more than 1 does not exceed 2. More than 2 does not exceed 5. Last one, more than. So I think yesterday's class gave us full clarity on what is the meaning of this word called progressive system of taxation. Correct, no? Higher the income, higher the tax. Lower the income, lower the tax. और लास्ट वाले बंदे को तो 42% के आसपास लग रहा है उसको. करेक्ट ना यार? लगेगा अरे यार. अब ये मत बोलो यार इनकम कमाएंगे नहीं, ऐसा थोड़ी होता है. चलो, आर वी क्लियर विद दिस एवरीबॉडी? नाउ आई हैव अ क्वेश्चन. हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट सेविंग्स बैंक अकाउंट विद देम? सबके पास है? राइट. कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आ रहा है उस पर? आ रहा है ना यार कुछ ना कुछ? अरे 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो आ रहा है ना यार. अरे बोलो यार. मैं एफडी का नहीं पूछ रहा हूं, सेविंग्स बैंक का पूछ रहा हूं. दोनों में फर्क है ना? राइट. फर्स्ट पॉइंट, ऑन दिस सेविंग्स बैंक यू आर गेटिंग इंटरेस्ट. इज इट इनकम फॉर यू? इज इट इनकम? अंडर विच हेड ऑफ इनकम यू विल शो? इनकम फ्रॉम
गुड, होशियार हो गए बच्चा यार, गुड. विल शो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. तो लॉजिक अप्लाई करो यार, ये सैलरी नहीं है, बीजीबीपी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, कैपिटल गेन्स नहीं है, तो जाएगा किधर बच्चा? एक ही हेड ऑफ इनकम ना, उसको इसलिए बोलते हैं हम लोग रेसिड्यूअरी हेड ऑफ इनकम. अगर इनकम टैक्सेबल है, वो चारों हेड ऑफ इनकम में जाएगा नहीं, तो जाएगा किधर? अदर सोर्सेस. नाम ही उन्होंने वैसा बना दिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. कुछ गिफ्ट आया, लगाओ टैक्स. कहाँ पे? अदर सोर्सेस. आया कुछ और इनकम, कुछ तो कर दिया यार, कुछ तो करके पैसा कमाया, वो चारों हेड ऑफ इनकम में जाता नहीं, ठीक है, लगाओ उसको अदर सोर्सेस में. सो गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? स्पीक आउट माय डियर फ्रेंड्स. Everyone clear with this point, all of us? Where will you show income from? Other sources. But let me tell you, income tax law has given some deduction for this interest on savings bank account under one beautiful section called 80TTA. इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है बेटा, TTA डेफिनेशन सेक्शन नंबर है. अब आप TTA का फुल फॉर्म मत पूछो मुझे. That section number is 80TTA. As per that section, they clearly told आपको जितना भी इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट मिलेगा, एक्चुअल इंटरेस्ट और 10,000, whichever is lower, you can take it as deduction. You can take it as deduction. So getting clarity everybody? Speak out now. Now what I am trying to say is, my dear friends, when we talk about this word deductions, come on, what are we talking about? Deduction. There are two types of deduction. Number one, deduction based on payments made. Number two, deductions based on incomes earned. What are first category? Deductions based on payments made. Let me give an example. Life insurance premium. समझ में आ रहा है सर? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आता है, ये भी आता है. नेक्स्ट, डोनेशन टू, कल बताया था आपको, पॉलिटिकल पार्टी. ये सब चीजों का आपको डिडक्शन मिलता है. ये अपना इनकम है, एक्सपेंडिचर है? एक्सपेंडिचर. फॉर द पेमेंट्स व्हाट यू हैव मेड, लॉ इज टेलिंग विल गिव यू डिडक्शन, विल गिव यू डिडक्शन. बट व्हेन वी टॉक अबाउट बेस्ड ऑन इनकम्स अर्नड, फर्स्ट add to GTI. करेक्ट है? वो तो इनकम है, पहली बात दोस्तों. बेटा इनकम है या नहीं? फर्स्ट add it to GTI and then claim deduction. Simple. Example, interest on SB account. Interest on what account, sir? SB account. Section number 80, TTA. And let me tell you, for life insurance we have got 80C, medical insurance we have got 80D, political party we have got 80GGB or GGC. Interest on savings bank account we have got 80TTA. TTA. So getting clarity? So what are the two types of deduction we have got? Deductions based on payments made. Second one, deductions based on incomes earned. Can we discuss one small example to get a clarity on this point? ये भी लिखेंगे हम लोग, बट पहले एक एग्जाम्पल डिस्कस करते फिर लिखते हैं सर. सुनो ध्यान से. One person, Mr. X, he has got salary income 6 lakh. कितना salary income? And he has got interest on SB account 14,000. And he paid life insurance premium 30,000. मतलब 6 लाख कमाए ना सर, उसमें 30,000 उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया. सर क्लियर? स्पीक आउट. राइट. हाउ डू वी कैलकुलेट टोटल इनकम? When I want to calculate total income, first I will take what? Salary of 6 lakhs. Interest on savings bank 14,000. करेक्ट है ना? टोटल कितना हुआ बेटा? Less 80C life insurance premium 30,000. 80TTA interest on savings bank account. So getting clarity? कितना interest? 14,000, but I'll take only 10,000.
Sir, I told you very clearly that 80 TTA interest on savings bank deduction is actual interest or 10,000, whichever is lower. Sir, already मैं आपको कल ही बताया. Government is giving a benefit. Any benefit given by the government will always have some conditions and restrictions. Sir, कोई भी चीज फ्री में आता है तो उसका कंडीशन रहता है ना यार. Always there is something called condition restriction when something is coming free. No doubt about it. If government is saying we'll supply rice free to every house, you cannot ask them, I want basmati rice. अरे भाई जो दे रहे वो ले ले. क्या तेरा डिमांड क्या है? ये फ्री में आ रहा है ना. When you're paying a price, can you demand? Speak out. Will you demand or not? Definitely will demand. Sir, do you agree to that? Sir, मैं क्या example दूँ उसके लिए? I'll give a small example here. See, for example, when we go to a Pani Puri center, I don't know about you guys, but I personally feel very happy when I pay 20 rupees. If that fellow is giving me 5 puris, that 5 puris actually don't make me feel so happy. Last में उसको बोलते हैं भैया एक सूखा पूरी देना. उसका जो खुशी मिलता ना यार, अलग ही लेवल का रहता है. आप लोग सब मेरे कैटेगरी हो. हाँ, सूखा पूरी से इतना खुशी क्यों मिलता है बेटा? बोल. हाँ, वो फ्री में आ रहा है उसके लिए खुशी मिलता है. इंडियन से हम लोग. अब ये मत बोलो स्टोरी सर स्टार्टिंग में स्पाइसी था, अभी थोड़ा कंट्रोल करना है, इसके लिए सूखा पूरी ले रहे हैं. ये सब नाटक है यार. कुछ फ्री में आ रहा है तो हम खुशी से लेते हैं. सर करेक्ट सर. नाउ कमिंग बैक टू डिस्कशन. इफ दैट फेलो हैज गिवन यू 5 पूरीज एंड व्हेन यू टेल भैया सूखा पूरी देना, वो बोलते हैं सूखा पूरी देने का कॉन्सेप्ट बंद कर दिए. कोविड से पहले देते थे, कोविड के बाद जितना पूरी देंगे उतना ही देंगे. सूखा पूरी बंद. अब बोलेंगे क्या? निकाल सूखा पूरी भाई. डिमांड करेंगे क्या? बोलो. अरे आप कर सकते हैं यार, हम लोग तो डिमांड नहीं कर सकते यार. कैसे डिमांड करेंगे? डिड यू पे प्राइस फॉर सूखा पूरी आल्सो? स्पीक आउट. व्हेन यू पे प्राइस यू कैन डिमांड, इफ नॉट यू डोंट. जनरली तो हम करते हैं, बोलते भैया थोड़ा सा डाल के देने, उसमें क्या है इतना तो ये पूरी, वो अलग बात हो गया, वो तो रिक्वेस्टिंग बात है. बट जनरली वी कांट डिमांड. नो. So that's why I'm just trying to tell you that when government is giving some deduction or exemption, it is subject to some condition, subject to some limits. Which case, what condition, limit and all, we'll go in detail separately. But यहाँ तक समझ में आया सबको? बेटा अब इसका टोटल इनकम क्या हो गया? कैलकुलेटर लाइन है क्या आप लोग? तो निकालो ना, बोलो ना यार. 5 lakhs 74,000. On that we'll calculate tax. How do we calculate tax on 5,74,000? Assuming age is less than 60 years. Up to 2.5 lakh. 74,000 पे 74,000 पे 20%. क्या बेटा क्या बोल रहा है तू? कल करे ना अपन कैलकुलेशन. अरे वो रिबेट किसको अप्लीकेबल है? जिसका इनकम 5 लाख के अंदर है उसको अप्लीकेबल है. इसका इनकम कितना है? 5,74,000. इसको रिबेट मिलता है क्या? मैं आपको कल ही बताया था आपको, जिसका इनकम 5 लाख 1 रुपए भी है उसको रिबेट मिलता ही नहीं है. रिबेट इज ओनली फॉर दोस हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख. तो इसका टैक्स कितना होता है? 2.5 लाख तक नील. 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 12,500. 74,000 का 20% कितना हुआ? 4,000 14,800 प्लस 12,500 27,300 into 4% प्लस इज इक्वल टू एंटर करो 28,000. दैट्स इट. प्लस इज इक्वल टू करो, आ जाएगा आंसर. हाँ 28,390. रॉन्ग आंसर. नॉट हैप्पी. क्या है आंसर बेटा? सोच के देख, चेक करके बोलो वापस. कैलकुलेट टैक्स. चेक करके बोलो आंसर क्या है वापस. एक्सीलेंट. दैट इज द आंसर 28,390. अरे बराबर ना यार. कौन सा सेक्शन है? 288. ए नहीं है बेटा, बी. A is for rounding off of total income. B is rounding off of tax payable. Are we getting clarity? We'll round off nearest multiple of what? 10 rupees. एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है राउंड ऑफ करना 100% कंपलसरी है. कंपलसरी है. अभी आप पूछेंगे मेरे से मार्क्स जाएगा क्या? नहीं बोल सकते. वो थोड़ा आदमी सटक वाला आदमी करेक्ट कर रहा है तो कुछ भी नहीं कर सकते हम. वो बोलेगा आपको करना चाहिए था, करे नहीं क्यों नहीं. आप बोलेंगे क्या? और इतना तो 2 रुपए का तो फर्क है. वो बोलेगा 2 रुपए नहीं है, बहुत फर्क है. तो क्या बोल सकते हैं हम उसको? प्रैक्टिकल में वी फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इट विल ऑलवेज राउंड ऑफ टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीस.
Getting clarity, everybody? All of us? 288A, rounding off of income. 288B, we'll round off nearest multiple of 10 rupees. What is section 87A? Rebate, which is only for resident individuals. देखो ना यार, कल लिखे ना यार. Rebate is only for resident individual whose total income does not exceed 5 lakhs. How much is the rebate? Tax payable or 12,500, whichever is lower. 9 to 10% you will always find lower only. Higher you will not find much. Why? Government है, higher देंगे क्या? और हम डिमांड कर सकते हैं क्या? जो दे रहे वो ले लो बस. Are we clear? Everybody? Done. I want this in your book. This one. Important. So deductions are how many types? 2 types. What is number 1? Based on payments made. Number 2, if it is based on incomes earned, first we'll add it to what? Gross total income. And then take what? Deductions. Done, my dear? Good. सर हो गया लिखना? सर हम लोग सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट का सेक्शन नंबर क्या लिखे बेटा? 80 TTA. But let me tell you one point. This is only for other than senior citizen. If it is senior citizen, we'll apply section 80 TTB. और उनको डिडक्शन है 50,000. समझ गए ना? अभी हम लिखते नहीं, जब डिडक्शन में जाएंगे डिटेल में पढ़ेंगे. ओके ना यार? तो अभी सब कुछ लिखेंगे तो कोई लॉजिक नहीं बनता, बाद में लिखते. ठीक है? कैन आई प्रोसीड? यस, डन. थैंक यू. ये एग्जाम्पल चाहिए यार आपकी बुक में.
LAP का मतलब क्या है? डिडक्शन कौन सेक्शन के अंदर मिल रहा है? 80C. And let me tell you this 80C, 80TTA, all these are a part of your chapter 6A. 6 is what? Roman 6. Chapter 6 है, deductions बात करते हैं उस बारे में. और हर एक सेक्शन का अपना अपना लिमिट है. किस सेक्शन में क्या लिमिट है? We'll go and discuss in deductions chapter. Which section, what is the limit? We'll talk in detail in deductions chapter. चल हो गया, क्लियर है? कैन आई प्रोसीड एवरीवन? राइट, कम ऑन नेक्स्ट. Now some interesting concept let me discuss with you. That yesterday we discussed that when we combine all 5 heads of income, what do we get, sir? Gross total income. From that we take deduction, the balance we call it as total income. On the total income we'll calculate tax payable and we'll reduce what? From tax payable what do we reduce? यार TDS बोला ना, TDS माइनस करेंगे, एडवांस टैक्स माइनस करेंगे. अगर TDS ज़्यादा कर दी ऑलरेडी तो हम क्या करेंगे? बैलेंस रिफंड क्लेम करेंगे. अगर TDS कम है तो हम जेब से पे करेंगे. कुछ एग्जांपल दिया था मैं, 1 लाख का TDS है और मुझे पे करना है 1,10,000, तो मैं क्या करूंगा? 1 लाख माइनस करके बाकी 10,000 गवर्नमेंट को पे करूंगा. बराबर यार? बट 1 लाख का TDS है बट मुझे गवर्नमेंट को पे करना है सिर्फ 90,000. 10,000 I'll claim it back as what? Refund. Friends, we discussed this. We spoke about this. Exactly. Now listen. दोस्तों अब मुझे एक बात बताओ. What is section 4? What does charitability section say? Income earned by an during previous year is chargeable to tax. Which year? Previous year मतलब year in which income is earned. Assessment year is the year in which previous year income is chargeable to tax. You already पढ़े ना सर हम लोग? Now don't get one doubt. Why are we writing this point once again? I have a reason for it. What is that? Please listen. This is the basic chargeability section which says that income earned by an assessee during the previous year is chargeable to tax in which year? Assessment year. But let me tell you guys, there are some exceptions. Exception का मतलब क्या है? What is exception? बोलो बेटा, exception का क्या मतलब होता है? Exemption नहीं है वो. हम सीए के बच्चे पता है मुझे, बट वो exemption नहीं है, वो exception है. What is exception? हाँ? Opposite बोलना है. Basically which is against the basic rule. Which is against the basic rule. What is the basic rule? Income earned in previous year is chargeable to tax in assessment year. Now what is against the basic rule? Income earned in previous year is chargeable to tax in previous year itself. समझ में आ रही बात? सर स्पीक आउट सर. इसमें 5 पॉइंट्स है सर, हर जगह 5 ही मिल रहा है अपने को. लिसन, फर्स्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट शिपिंग बिजनेस. व्हाट बिजनेस सर? Of NR. NR stands for non-resident. And when do you call a person as resident? When do you call a person as non-resident? We will talk in detail when I go to the chapter called residential status. And I told you that that is based on how many days you are in India. आपका आधार कार्ड अलग है, रेसिडेंशियल स्टेटस अलग है. हम सबके पास आधार कार्ड है, बट आधार कार्ड इज नॉट ए प्रूफ ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस. यू आर गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट? इसका लॉजिक क्या है पता है? One non-resident, one foreign fellow, he is doing shipping business. He has come to India, doing some business in India. Shipping activity has done. In that ship, he is running away. Officer is telling, beta, get out. But pay tax and get out.
Now what that fellow is telling, I earned in previous year, no? Next year I will come back in assessment year and I'll pay the tax because income earned in previous year is chargeable to tax in assessment year. Officer बोल रहा है बेटा हमके पास गारंटी क्या है तू वापस आएगा. So getting my point everybody. So what law is telling? Pay now itself and then walk out. Logic only, no? So speak out. That is why that is called what, sir? Exception. Exception means against the basic principle. What is the basic principle? Income earned in previous year is chargeable to tax in assessment year. Exception means against the basic rule. What is the first point? Shipping business of non-resident. This is section 172, which says whatever turnover you have done in India, that into 7.5%. That is deemed to be your income. That into 7.5%. That is deemed to be your income. Because उसको बैठ के बोलेंगे भैया तू रुक जा 10 दिन, हम लोग तेरा ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, P&L बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे तेरा इनकम क्या है, फिर कैलकुलेट करेंगे तेरा टैक्स क्या है. वो रुकेगा तब तक? तो एक्ट ने क्या बोल दिया? जितना टर्नओवर तू किया उसका इंटू 7.5%. दैट इज ओनली डीम्ड टू बी योर इनकम. क्लियर है? आपके लेवल में इतना ही है. फाइनल में मोर डीपर. क्लियर नो? बिकॉज वंस सी logic of government is very simple. By the time ICI is very simple. By the time you come to final, you should be more taller, stronger and sharper. Wonderful. उसके लिए हॉर्लिक्स पीने की जरूरत नहीं है. कॉन्सेप्ट समझ लो, हो जाएगा ऑटोमेटिक. क्लियर? व्हाट फर्स्ट वन? Shipping business of non-resident. Second one, persons leaving India permanently or for long time. ये बंदा इंडिया छोड़ के जा रहा है, क्या बोल रहा है गवर्नमेंट? जा बेटा जा, मना थोड़ी है, जा निकल, बट जितना पैसे ऑलरेडी कमाया उसका टैक्स पे करके निकल. Clear my dear friends? I'll ask you one question. Shiva Teja is going to Dubai next week. Example. Yeah, I'm going to Dubai next week. For let's say 10 days trip. For 10 days trip, I'm going to Dubai next week. Will they ask me to pay tax and then get out? No. Why? Because I'm not going permanently and I'm not going for a long time. And the problem here is this long time word is not defined in the law. Define नहीं करे. Long time का meaning क्या है? But I will tell you what is the meaning. Because long time का logically meaning होता है long time should be more than 1 year. Because less than 1 year पक्का वापस आएगा ना यार वो. जब वापस आएगा उसको पकड़ो. आप ये पूछ सकते वापस नहीं आए तो सर, वापस उसको नहीं आना है तो वो गवर्नमेंट वाले उठा के फेंकेंगे उसको. Because there is something called visa. पता है ना यार? Passport is given by our government. Visa is given by that country, allowing you to stay in that country. And every visa has got a validity period. And if you stay in that country after the time of visa is over, they'll give lifetime imprisonment. And some countries like Dubai, North Korea, person will be hanged to death. अच्छा बोल रहे हैं सर, जाना ही नहीं हमको वहाँ पे. So getting my point? No sir, it's illegal. No, it's very much illegal. अरे वो government, that country has given you permission to stay for 1 month. How can you stay for 2 months there? Why will they keep quiet? अरे बिना वीजा का कैसा आने देंगे यार कोई भी कंट्री? अरे आप लोग देखे ना वो मूवी सलमान खान, कौन सा वाला है वो? अरे एक छोटे बच्चे को लेके जाता ना यार पाकिस्तान. What is 27? Wonderful, very good. जितना वो मूवी याद है ना उतना ये भी याद होना चाहिए. हाँ, बजरंग की बैजो मूवी में लेके जाता ना यार छोटी बच्ची को. Why was he screwed up there in Pakistan? Not because he brought the lady, girl. He was screwed up only because not Indian. He did not take any permission to enter that country. Indians can go to Pakistan. जितना मूवी में दिखा था वैसा कुछ नहीं है. We can also take visa and go to Pakistan. Nobody will do us and do anything to us. But people have created that mindset that हमको उधर नहीं जाना है, उनको इधर पे नहीं आना है. That mindset is created. Clear now everybody? But the point is very clear. Why was he caught? Salman Khan was caught in that movie only for a simple reason that he went to that country without the permission. Sir, याद है पिक्चर देखे? बच्चा बोल रहे हैं सब पूरा सीन टू सीन याद आ गया अभी. Anyways, are we clear with this point? What the first point?
Shipping business of non-resident. Second point, person leaving India permanently or for long time. Section 174. 173 नहीं है बेटा, वो फाइनल में 173 नहीं है, 4 नहीं आपको बोल रहा, आप देख रहे हैं ना उधर 72 आया, 74 आया, बीच का किधर गया, वो है नहीं, ठीक है ना. नेक्स्ट, AOP, BOI और AJP. क्या है बेटा AOP का मतलब क्या है? एसोसिएशन ऑफ. BOI, AJP, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. पता है अपने को ये चीज? पढ़े ना हम लोग? कौन सेक्शन में पढ़े? 231. एक्सीलेंट. व्हाट डज इट डिफाइन? पर्सन. गुड सर. सेक्शंस इतना याद होना चाहिए कि दैट शुड इंस्टिल इन योर बॉडी ऑटोमेटिकली. इट विल हैपन, डेफिनेटली विल हैपन, नो डाउट अबाउट इट. आर वी क्लियर विद दिस पॉइंट? दैट विल डेफिनेटली हैपन, नो डाउट अबाउट इट. इट विल हैपन, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. ओके. AOP, BOI, AJP formed for a not long duration. What is this word? Short duration or purpose. And logically, that short duration means less than 1 year. Sir, AOP bana hai sir. For example, let's take a small example like this. I told Vinod sir, sir हम दोनों मिलकर कुछ बिजनेस करते हैं. मैं और विनोद सर दोनों साथ में आए. वो 6 महीने का बिजनेस है, सिर्फ 6 महीने बिजनेस करके उसको बंद करने वाले. Clear my dear friends? And me and Vinod sir did not create a partnership firm. And me and Vinod sir did not create a company. हमको पार्टनरशिप फर्म बोल सकते हैं क्या आप लोग? कंपनी बोल सकते हैं क्या? हम दोनों को मिलकर हमारा नाम क्या हो जाएगा? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. उनका नाम अलग है, मेरा नाम अलग है, बट दोनों को मिलकर क्या बोलेंगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. एंड वी स्टार्टेड डूइंग बिजनेस ओनली फॉर हाउ मेनी मंथ्स? गवर्नमेंट इज टेलिंग मिस्टर विनोद, मिस्टर शिवा तेजा, you both close your business and go wherever you want, but please go after paying the tax. अगर मैं बोलूँगा, hello income tax faculty, hello, previous year income is chargeable to tax in assessment year. Next year me and Vinod sir will come and pay the tax. That fellow will tell, hello brother, exception. You're getting my point everybody? So speak out all of us. चलो हाँ. पैन कार्ड लेना पड़ेगा अलग से, BOI का अलग पैन कार्ड आता है. आप ये पूछ सकते हैं, नेक्स्ट डाउट मुझे पता है क्या आएगा. नेक्स्ट डाउट विल कम, सर आप और विनोद सर दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे, आपने कुछ पैन कार्ड लिया नहीं, कुछ भी किए नहीं, 6 महीने तक बिजनेस करे, बंद कर दिए. गवर्नमेंट को कैसा मालूम पड़ेगा? जिस दिन मालूम पड़ेगा ना, हम पैन कार्ड बिना अप्लाई करे, हम दोनों के नाम पे टुगेदर नाम पे एक पैन कार्ड अलॉट करते वो लोग, एंड टेल यू टू टेल बोथ ऑफ अस टुगेदर टू पे द टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी. Sir, I hope your answer is clarified. Clear, no? If anyone would have got that doubt, गवर्नमेंट को कैसा मालूम पड़ेगा? आप और विनोद सर इतना बड़ा प्रेस्टीज पॉइंट बिल्डिंग में कौन क्या कर रहा है, किसको भी नहीं मालूम. आप और विनोद सर साथ में कुछ करेंगे तो किसको मालूम पड़ेगा? अभी मालूम नहीं पड़ेगा, जब मालूम पड़ेगा तो खत्म. You getting my point? कभी भी हो सकता है यार, I mean, नहीं बोल सकते यार, कभी भी कुछ भी हो सकता है. कोई बंदा एक्सपेक्ट नहीं करता उसके ऊपर इनकम टैक्स वाले आके पकड़ते उसको. जिस दिन पकड़ा गया तो काम खत्म. Correct? No, you have seen lot of movies, no? वो movie देखे क्या? Special 26. People they in that movie they actually do some fake income tax rates, and they keep on checking कहाँ पे क्या है, कौन सा खोले तो कितना कैश गिरेगा, गोल्ड गिरेगा. Check. You have seen that movie? And a lot of South Indian movies also, Tamil movies and Telugu movies, where they show this income tax raid. They'll do like this. इसके अंदर कुछ नहीं है, ये प्लाईवुड है, टेंशन मत लो. बच्चा सोच रहे सर क्या है इसके अंदर. सर क्लियर विद दैट पॉइंट एवरीबॉडी? डन. सो व्हाट वाज फर्स्ट एक्सेप्शन? शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट. सेकंड वन, पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली और फॉर लॉन्ग टाइम. थर्ड वन, AOP. मैं सोचा सेम ही साउंड आएगा. AOP, BOI, AJP formed for what? Short duration or purpose. Section 175, 174A. सर स्टूडेंट्स, चलो कितने एक्सेप्शन है? 5, 3 ही हो गए अभी. फर्स्ट वन, कम ऑन. सेकंड वन, persons leaving India permanently or for long time. Third one, AOP, BOI, AJP
formed for short duration or purpose. Fourth one, persons likely to transfer property to avoid tax. Section 175. It's not 174b, 175. What does it say, sir? Person likely to what? To avoid what, sir? Tax. He knows that income tax officer is coming, going to catching him, or something is going to happen very soon. And he thought, whatever properties I have, government will take over my properties if they catch me. And this fellow, what he has done? Transfer the property. To avoid, if you do all these games, we will catch you in the previous year itself. Previous year itself. You're getting my point? Speak out. I'll give a small example for this so that clarity will come. दोस्त आपका नाम क्या है? Gaurav. So let's say for a second, one of our friend Gaurav. Listen, Shiva Teja has got one property. Okay? In which there is a tenant. Tenant is paying a rent of 30,000 per month. Per annum? 3,60,000. And Shiva Teja income is more than 10 lakhs only. So whatever 360 comes to me, I should pay tax at 30% only. अरे मेरा 10 लाख का इनकम ऊपर है यार, 10 लाख ऊपर जितना भी इनकम आता है 30% तो लगेगा ना यार. So whatever 360 rent I am getting, I should pay tax at 30%. Now what I told my tenant is, tenant, आप एक काम करो, मुझे रेंट नहीं देना, ठीक है? पूरा साल खत्म होने के बाद, on March 31st, pay the rent for a whole year at a time. Pay rent for which year? Whole year at a time. What did I say, sir? Pay the rent for whole year at a time. Sir, you got the logic, no? Sir, मैं किसी को रेंट पे दिया, कितना रेंट है? 30,000 पर मंथ. पर एनम कितना है? 3,60,000. और मैं इसको क्या बताया? भैया तू रेंट हर मंथ मत दे, मुझे कब देना? एट ए टाइम एंड ऑफ द ईयर. कितना रेंट देगा वो? 3,60,000. और मैं क्या किया? On 28th of March, 28th of March, I transferred property to Gaurav with a condition that 4th April I will take back from Gaurav. समझ रहे आप मैं क्या कर रहा हूँ? 28th March को मैंने क्या किया? Property transferred to Gaurav. 4th April, what did I do? Took back from Gaurav. Now tell me, as on 31st March, who is the owner? As on 31st March, who is the owner? Who will get the rent? Gaurav. Gaurav does not have any income, assuming. He has only that income of 3,60,000. Is it less than 5 lakhs? Speak out. Tax क्या आएगा? Zero. Correct, no? Government is telling, if you try to play all these nonsense shit games, we will tax you in the previous year itself. Because you are a person who is trying to transfer the property to avoid tax. I think example is clear for everyone, no? समझ में आ रहा ना example? ऐसा गेम्स खेलेंगे तो वो भी गेम खेल सकते, ठीक है ना? Sir, everybody, how many points done? 4. What are those? Basically exceptions to the general rule. What is the general rule? Section 4. Income earned in previous year is chargeable to tax in assessment year. And for that we have got 5 exceptions. What is number 1? Shipping business of non-resident. Number 2, person leaving India. अरे यार रुक जाओ एक सेकंड, सब देख के बोल रहे यार भैया, बोलो अबे. Shipping business of non-resident. Wait. 27. 29. How many lists are there in 7th schedule to the Constitution? Union list? Correct? Clear? How many heads of income are there? What are the 5 heads of income? Salaries, house property, PGBP, capital gains, other sources. All together, gross total income. Take what? And a chapter. Then what we get? On that we'll calculate tax, which will be rounded off nearest multiple of 10 rupees. 288B. 288A is rounding off of income. हो गया? क्लियर है? डाइवर्ट हो गया 2 मिनट इधर से. आप भी बोलो ये 4-5 क्या है? Shipping business of non-resident. Person leaving India permanently or for long time. Third one. AOP, BOI, AJP. Formed for short duration or purpose. Fourth one. Person likely to transfer property to avoid tax. Last point कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है. चलो बेटा 4 points वापस एक बार प्लीज. First one. Shipping business of non-resident.
Fourth one, person likely to transfer property to avoid tax. Third one, AOP, BOI, AJP formed for short duration or purpose. Second, person leaving India permanently or for long time. Fifth one, बोलो यार सर यहाँ तक क्लियर है सबको? So speak out. चलो listen to the last point now. The last point says, yes. नीचे पूछना पड़ेगा प्लीज, आइडिया नहीं है. टैक्स का पूछो, मैं बोलता हूँ. सेक्शन 176, व्हाट इज दैट? डिस्कंटिन्यूड बिजनेस. सो फ्रैंकली यार टैक्स के अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं. मतलब लास्ट 10 साल से, आई मीन आई स्टार्टेड माई टीचिंग इन 2012 December. तो ऑलमोस्ट in few months I'll complete 10 years of my teaching. And in last 10 years I taught only tax. I mean I never taught costing, I never taught FM, I never taught anything except for tax. Nothing. तो इसलिए कोई बच्चा आता है, मतलब सो बोलता है सर कुछ डाउट है, मैं पहले पूछता हूँ उसको किस में डाउट है. वो बोलता है टैक्स. बोलता है वो बोलता है सर कॉस्टिंग. जा प्लीज. Because see everyone has got their expertise, no? Everyone has got their expertise, which subject they are strong at and which you are strong at, over. और ये सब्जेक्ट ही इतना बड़ा ओशन है, अब क्या मैं कुछ और एसएम पढ़ाऊंगा, ऑडिट पढ़ाऊंगा, हो गया, इसमें ही काम खत्म हो गया मेरा. यही बड़ा इंडियन ओशन है. करेक्ट? नो, बिकॉज वी नीड टू अपडेट ऑल्सो न्यू पॉइंट्स, अमेंडमेंट्स, चेंजेस, एवरीथिंग. बिकॉज है ना हमारे साथ एक मैडम जी, निर्मला सीतारामन जी, हर साल चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ बोलेंगे, बेटा रेडी हो जाओ, अगले साल कुछ और चेंज. थोड़ा मैंने बजट आएगा ना फरवरी में, फरवरी 23 बजट आएगा ना, आपके एग्जाम के लिए अप्लीकेबल है क्या? हाँ, कोई बंदा बोलता है अप्लीकेबल है, उसको बोल देना ऑल द बेस्ट फॉर May 24 एग्जाम. ठीक है ना? डन. सर क्लियर है यहाँ तक? डन. चलो गाइस, व्हाट इज सेक्शन 4? चार्जेबिलिटी सेक्शन. इनकम अर्न्ड बाय एन assessee during the previous year is chargeable to tax in assessment year. How many exceptions are there? What is number 1? Shipping business of non-resident person leaving India permanently or for long time. AOP, BOI, AJP formed for short duration or purpose. Person likely to transfer property to avoid tax. Last one, discontinued business. Are we clear? दोस्त क्लियर है? हाँ प्लीज पार्टिसिपेट करना, जवाब देना कंपल्सरी. सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर. सेक्शन 4 87A, हाँ, रिबेट. 172 shipping business of non-resident. 174B, ए नहीं है वहां पे, ए है, मैंने पूछा बी. सर क्लियर है ना? 173 फाइनल में. अच्छा 174 person leaving India permanently or for long time. What is the last one? Discontinued business. So मैंने explain नहीं किया उसको क्योंकि point is very clear. You are closing your business in middle of the year. Close it, but pay tax and close. Or let me also tell you, this is more for your knowledge, where they told in first 4 cases they told AO shall. Last case they told AO may. सर शेल और मे में फर्क है ना? शेल मतलब should, that means mandatory. May means may be or may not be, it's optional. So in first 4 cases ये वो पक्का 100% उसको previous year में ही पकड़ेगा. But in last case ये वो मेटल, हम बिजनेस क्लोज कर रहे बीच में, ये वो मेटल ठीक है, इट्स ओके, असेसमेंट में पे कर, कोई बात नहीं, कहा जाएगा, इधर ही बंदा है. यू गेटिंग माई पॉइंट? So last case, it is a discretion of the assessing officer. एवो का मतलब जानते हैं ना हम लोग? इसके लिए मैं स्टार्टिंग में पढ़ा आज कि एवो कौन होता है, ट्रिब्यूनल कौन होता है, ये सब नॉलेज लेना चाहिए अपने पास. क्लियर? नो, 99.99% ये पूछेंगे नहीं एग्जाम में. ये पूछेंगे नहीं मतलब एवो शेल एवो मे, वो 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर है ना सर? क्या है 5 पॉइंट्स? लास्ट टाइम, shipping business of non-resident person leaving India permanently or for long time. AOP, BOI, AJP formed for short duration or purpose. Person likely to transfer property to avoid tax. Last one, discontinued business. Fully clear? 172,
174, 174A, 175, 176. वापस बेटा एक लास्ट टाइम 172, 174, 174A, 175, 176. Clear, friends? Everybody? Yesterday after class, some student came to me and told me, sir, section number याद रखना जरूरी है क्या, मैंडेटरी है क्या? फाइनल लेवल पे 100% मैंडेटरी, but inter level also, if you remember section number, it will be more easy for you to present in the exam. And when you write which section number in the exam, that person who's correcting will think कुछ तो है, सेक्शन में लिख रहा मतलब आदमी में कुछ तो दम है. करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स? नंबर भी नहीं है, कॉन्सेप्ट भी आधा आधा है, उसको लगेगा भैया कुछ तो गड़बड़ है. पता है ना आपको ये? दया मार्क्स तोड़. Is that clear with this point, everybody? So that is why section number will act as a reference for us to revise and reference for us to write better in the exam. That is the reason why we always learn with section numbers only. Are we clear? चलो ये लिखो बेटा, खत्म करो. सेक्शन 4 फिर से लिखना, हेडिंग लिख के नीचे एग्जामिशंस लिखो.
Guys, done? Everybody. So what is the golden rule of income tax? All revenue receipts are taxable unless specifically exempt. All capital assets are exempt unless specifically taxable. Exemptions are given under which section? Check कर लो, लिखा है मैंने. Good. Exemptions are given in section 10. And exempted income do not form part of what? Total income. But deductions are those what we reduce from gross total income. And deductions are given by chapter 6a. How many types of deductions are there? 2. What are the 2 types? Deductions based on payments made, deductions based on incomes earned. And if a deduction is based on payments made, क्या करेंगे बेटा उसको? सीधा का सीधा reduce कर देंगे. अगर deduction is based on income earned, first we will add it to gross total income. Then we will take deduction. Correct, friends? First we will add it to gross total income. Then we will take deduction. Example? Interest on savings bank account. Which section? 80 TTA. Come on, section number 80 TTA. What is the deduction? Interest or 10,000, whichever is lower. Sir, clarity आ रहा है? समझ में आ रहा है बात? सबको क्लियर है ये बात? What is TDS full form? Tax deducted at? Exactly. How many heads of income are there? What is the third one? Profits and gains from business and profession. Fourth one? Fifth one? Income from? Exactly. I hope we are clear till this point, everybody. Pakka, my dear friends. Now, I'll tell you one special tax rate. Then we'll talk in detail. Clear? Listen, just listen. Don't write anything. Sir, one person X. Assume for a second, his salary is 10 lakh. Other person Y. His salary is 10 lakhs. दोनों का TDS सेम होगा या नहीं होगा? एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को सैलरी देगा तो टैक्स कट करके देगा ना यार. दोनों का TDS सेम होगा नहीं होगा? सेम ही होगा, बिकॉज दोनों का सैलरी सेम है. करेक्ट यार? बट ये बंदे ने 10 लाख में से 1 लाख पे किया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये टैक्स किस पे भरेगा? पर ये कुछ भी पे नहीं किया, टैक्स किस पे भरेगा? तो इसका TDS अलग होता है, इसका TDS अलग होता है. Even though the gross figure is same. Even though what is same? Gross figure is same. अच्छा, समझ में आ रहा है बात सबको? Everybody clear with this point, all of us? पक्का? Sure? Next, one more interesting case, let me tell you. There is one beautiful section called 115BB. Tax on betting, gambling, lottery, horse race, or any other games. Technically we call it as casual incomes. बोला बेटा क्या बोलेंगे हम उसको? And 115BB says straight away please pay tax at the rate of 30%. No compromise, nothing doing, no discussion. Straight away tax at what rate, sir? 30%. So getting clarity, everybody? Speak out. Imagine one person X, he has got lottery income of 6 lakh rupees और कुछ भी इनकम नहीं है उसके पास. कुछ भी इनकम नहीं है यार, सिर्फ 6 लाख का लॉटरी इनकम है. Can we apply the base condition limit of 2.5 lakh, 2.5 to 5, 5 to 10? Act told nothing you can apply. Straight away pay tax it. That's why it is called casual income. Winning from betting, gambling, lottery, horse race, or any other games. Kulja, Sim Sim, Big Boss. So what? Pay tax. You're getting my point, no? All Big Boss and all keep with you only. But for a tax, there's no difference. I think I told you this point. One doctor was selling drugs. I think I told you in the class. He was also caught. Illegal. वो बोला illegal है ना? अरे यार हमको illegal, legal से कोई लेना देना नहीं है. जहाँ पे income है, वहाँ पे हम है. Getting clarity on this point? Everybody? चलो, write this. Shares का अलग concept है. वो next बोलूँगा. Break के बाद बोलूँगा.
ये एक लिख दो, फिर ब्रेक लिख दो, उसके बाद बोलूंगा, ठीक है. पुट साइड हेडिंग सेक्शन 115 बीबी. सर कल आपको एक चीज बोला था, याद है कि थोड़ा सा टैक्स रेट एक्ट में, थोड़ा सा टैक्स रेट फाइनेंस एक्ट में. दिस इज अ टैक्स रेट इन इनकम टैक्स एक्ट ओनली बिकॉज सेक्शन नंबर इज देयर. क्लियर? राइट डाउन. इन केस ऑफ winning from betting, write like this, right what I am telling. Put the heading section 115 BB. नीचे लिखना in case of winnings from, in case of winnings from betting, winnings from betting, comma gambling, betting, comma gambling, comma lottery, betting, gambling, lottery, comma horse race, comma horse race, or any other games of any sort, or any other games of any sort, or any other games of any sort. एग्जाम्पल पता है, सुडोकू करके गेम होता है, पेपर में आता है ना सर, वो नंबर्स करने का, वो भी तो गेम ही है ना यार. Or any other games of any sort, then the tax rate is, सर मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखना प्लीज. Then the tax rate is flat 30%. FLAT, flat 30%. Why I'm telling flat 30%, you know? Imagine a case like this. Shiva Teja has done betting on horse race. Example, I'll not do that. Example, I went to a horse race club. To go there, I spent 1 lakh. Eating there, 50,000. Example. And I got a winning of 5 lakh. 5 लाख आया, 1.5 लाख खर्च हुआ, नेट कितना बचा? 3.5 लाख. बट एक्ट ने बोल रहा है तेरा 1.5 लाख से लेना देना है नहीं, तो जीता कितना? उस पर बढ़ दे 30%. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कॉल्ड फ्लैट. समझ में आ रहा है सर? फ्लैट मतलब यू कांट रिड्यूस एनी एक्सपेंडिचर. जितना इनकम आया सीधा का सीधा 30% टैक्स पे कर. या हाँ, 30% लगता है ना. तो 4 लाख का 30%, नहीं नहीं नहीं, 4 लाख का 30% कितना है? 1,20,000. पर रिबेट आता कितना है? 12,500. तो पूरा टैक्स तो जीरो हो नहीं सकता. समझ गए ना मेरी बात? तो पूरा टैक्स तो जीरो हो नहीं सकता. दैट इज नॉट पॉसिबल. नहीं, एक्ट तो साइलेंट है. एक्ट तो कभी बोला नहीं कि रिबेट इसको नहीं देंगे, उसको नहीं देंगे, इसको नहीं देंगे, उसको नहीं देंगे. तो मतलब क्या है? जब मन करे वह यूज करो. बराबर ना? एक्ट जब सी whenever act is silent, we always make use of positivity in that act. Clear, no? Everybody? Sir, done. चलो एक छोटा सा ब्रेक लेते, फिर डिस्कस करते. थैंक यू.
Done. Chalo, get back. Wonderful. Get back. So I think we are clear with the points what we discussed so far, everybody. Bolo beta. So what is section 27? How many sources are there for income tax law? 5. How many exceptions are there to section 4? Oh. How many types of deductions are there? अब बोलो 5. वो तो 2 ही है ना. What is number 1? Deduction based on? Other one? Deductions based on incomes earned. Clear, my dear friends, everybody? All of us? Right. Now one interesting case I'll discuss with you. Listen very clearly. Sir, let's say there is one person, Mr. A, who is having huge properties. Huge what, sir? Properties. Having huge properties, but never paid tax. हो सकता है यार? स्टूडेंट बोल रहा है, अरे वही तो होता है सर हमेशा. He never paid tax. Now, one fine day, assessing officer has done IT raid. What is IT raid? Income tax raid, exactly. Officer has done what, my dear friends? Income tax raid. And found the details of investments. मिल गया उसको, इसके पास ये प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है, और उससे पूछ रहे भैया तू कहाँ से लिया, ये सब पैसे कहाँ से आया? वो बोल रहा है आया कहाँ से? I got it. How means? Somehow I got it. ऐसे डायलॉग मार रहे पूरा. क्लियर है सर? अभी टैक्स लगता है क्या इस पे? Speak out. Let me tell you the tax rate on this is 60% plus 25% surcharge plus 4% HEC. Calculate कर लो, 78% होता है. Please calculate. 25% of 60% will be 75%. 4% on 75 will be 3%, which would effectively be 78%. आया 78? अरे पता है ना कैलकुलेट कैसे करना है अपने को? सरचार्ज विल कैलकुलेट ऑन व्हाट? टैक्स. 20% ऑन 60%, 4% ऑन टोटल. अरे यस और नो यार, क्या रेट है आपको? 78%. इतना टैक्स लगेगा सर? ये सिर्फ टैक्स है, इंटरेस्ट अलग, पेनाल्टी अलग. सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय section 115 BBE. Which section? 115 BBE, which clearly says that in case of unexplained income, unexplained investments. Number 3, investment not fully recorded. Number 4, अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट. कैश क्रेडिट मतलब आपके बैंक में 20 लाख रुपीस आए और 20 lakhs कैश डिपॉजिट इन योर बैंक. दे विल आस्क यू फ्रॉम वेयर यू गॉट 20 lakhs. ही टोल्ड समहाउ आई गॉट. आया ऐसे ही मतलब कुछ तो एक्सप्लेनेशन देंगे. तो इफ इट इज नॉट प्रॉपर यू विल पे टैक्स एट व्हाट रेट सर? 60%. गेटिंग क्लैरिटी सर? स्पीक आउट. आई विल गिव अ स्मॉल एग्जांपल, प्रैक्टिकल केस आई विल टेल यू. एक बंदे ने क्या किया, उसके पास बैलेंस शीट में एक ही एसेट है, विच इज वन बाइक. बाइक के अलावा और कोई एसेट है नहीं उसके पास इन द बैलेंस शीट. बट इन P&L अकाउंट देयर इज 2 पेट्रोल एक्सपेंसेस, 2 डीजल एक्सपेंसेस. समझ रहे आप मेरी बात? ऑफिसर नोटिस दिया, भैया गाड़ी है तेरे पास एक ही, पेट्रोल डीजल दोनों क्या मिक्स करके डाला क्या उसमें? यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबॉडी? He might explain, saying what, I would have taken one generator on rent, 10 दिन पावर नहीं था तो जनरेटर में डीजल डाले हम लोग. एक्सप्लेन कर सकते हैं. If it's explained, very good. Not explained, gone. What is the rate of tax? Plus, exactly. So getting clarity on this point, everybody. Now listen, my dear friends. Just one. जनरेटर नहीं है एसेट में, वही तो बोल रहा हूं मैं. रेंट पे लिया
जनरेटर रेंट नहीं हो सकता क्या? अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि रेंट दिख रहा नहीं P&L में, बोलेगा फ्री में दिया मेरा दोस्त। फिर वो दोस्त का नंबर दो और उसका पैन कार्ड दो, उससे पूछेंगे जाके कि तू फ्री में दिया क्या जनरेटर? उसने बोला हाँ, तो इसको छोड़ देंगे। उसने बोला ना, तो ये गया। यू गेटिंग माई पॉइंट? Income tax do a back check. If you tell that I got this money because of so and so person, they'll definitely check with him whether that fellow actually gave or not. You're getting my point, everybody? Sorry, bro, close kar dona, please. It's diverting me badly. Sir, getting my point, everybody? Clarity aaya sabko? So income tax does that back check. Whatever story you are telling, is it true or not? Correct? No, because हम इंडियन से, हम स्टोरी बोले में मास्टर से, नेक्स्ट लेवल के मास्टर से, वो भी गवर्नमेंट की बात आती तो हम स्टोरी तो बोले जाते बोलते जाते। Clear है sir? Now see. Sir, this is the module 1 which most of you already got. In this we have topics like basic concepts which we are doing now, little more pending which we might complete today or complete tomorrow. But tomorrow for sure we'll close the basic concept. Clear? Next topic what we are going to learn. And after that if you see what is that third one? बहुत ही खतरनाक सुपर डुपर कॉन्सेप्ट है एग्रीकल्चरल इनकम, बिकॉज इट्स द बैकबोन ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट वांट्स टू गिव सम एग्जम्पशन टू देम। एंड जिसके पास एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर दोनों इनकम है उसको तो पकड़ के मारेंगे कि तेरे पास दोनों है, तू टैक्स भर, तू तोप आदमी है, तू बड़ा आदमी है। अगर तेरे पास सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है तो हम तेरे को टच नहीं करेंगे, तेरे को टैक्स नहीं लगाएंगे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? स्पेशल कॉन्सेप्ट इज विच विल टॉक। नेक्स्ट वन व्हाट वी हैव? सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। I mean exempt from tax, ठीक है? Then income from salaries, house property, then profits and gains of what? Business or profession. Getting clarity? और heads of income क्या बाकी रह गया? Capital gains, other sources. In your module 2, you will find your capital gains, other sources, clubbing, set off, deductions, TDS, return of income. So yesterday whatever process I explained to you in income tax, half the process is in module 1, balance of process is in module 2, and module 2 is comparatively smaller module. The reason for that is because PGBP will take little more time, because PGBP is slightly bigger topic, because India में there are so many business people, so it takes some time. Salary also will take some time. सबसे छोटा head of income है house property और एक head of income called income from other sources. Getting my point? But PGBP salary will take some time, comparatively only. Getting my point, everybody? Now see here, basic concepts. Did we talk about pillars of democracy? How many pillars are there? What are the 5 pillars? Legislature, executive government, judiciary, press, controller and auditor general. Judiciary क्या करते? Exactly. Article 265 ये याद है क्या? No tax shall be levied or collected except by authority of law. Friends, now see there. Main Act was enacted in the year 1961 and it came into force from 1st April 1962. Indian taxation structure is a mix of number of provisions either governed by income tax law and at some stages by number of mercantile and corporate laws. This point is very important, which we all know. What is that word? Act is amended by the Finance Act from year to year based on what? Based on budget presented by the finance minister in the parliament. And we are going to learn Finance Act 2022. Correct, sir? For our exam, previous year is what? For our exam, what is the previous year? 22-23. Assessment year? 23-24. Sir, ये बात बताया आपको मैंने already. For our exam, previous year is what? 22-23. Assessment year? 23-24. Getting clarity, everybody? Now, what is tax? Tax is a compulsory fee charged by the government on a product, service, income, wealth, activity. Example, GST, wealth tax, customs duty. But we are concerned only about income tax. These taxes are the basic source of revenue to the government. And the revenue so raised is utilized for meeting the expenses of the government in relation to defense, education, healthcare, infrastructure like roads, dams, etc. उसके लिए तो यूज करेंगे ना यार. Straight away they'll put into their pocket. हाँ वो अलग बात है, but as such they are supposed to use the money for this purpose only.
Clear everybody? ये याद है सर? What are three list? Do we remember these words called impact means what? Impact means who is liable to pay. Incidence means who actually pays. Both are same in case of direct tax. Both are different in case of indirect tax. And where is the concept of shifting of tax burden? That concept is not there in direct tax. That concept is only in clear. Done, no? Entry number 82. Yaad hai? Entry number basically means serial number, sir. Entry number 82 talks about tax on income other than agricultural income. And this is known as Income Tax Act, which is on income. Central government levies this tax. And that is shared with the state government. Getting clarity? Next one. Duties of customs. Customs Act, customs duty, central government, and that is fully taken by central government. Getting clarity on this point, everybody? दोस्तों बोलो सर. See this point. What is this line, sir? Undisclosed sources of income. If it is disclosed, if it is explained, we will not touch you. We will touch you only when it is undisclosed. Cash credit, section 68. Any sum is found credited in the books of accounts of what? assessee. कोई कैश क्रेडिट है, कोई बैंक में कुछ पैसा आया, कहाँ से आया बोलते वो बोल रहा नहीं आदमी, एक्सप्लेनेशन दे रहा नहीं. यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट, अनएक्सप्लेन्ड व्हाट? Investments made and not recorded in the previous year. Unexplained money. समझ गए ना सर आप लोग? Yeah, what first one? Cash credit. Second one, unexplained investment. Third one, unexplained money is found to be the owner of any money, bullion, jewelry. सर बुलियन में ज्वेलरी में फर्क क्या है दोस्त? बोलो फर्क क्या है? कुछ आइडिया नहीं है? ज्वेलरी मीन्स ऑर्नामेंटल फॉर्म ऑफ गोल्ड. बुलियन मीन्स नहीं, बुलियन का मतलब प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड. गोल्ड बिस्केट, गोल्ड कॉइन्स, उसको हम बोलते हैं बुलियन. जो ऑर्नामेंट की फॉर्म में ज्वेलरी, रिंग, कड़ा, चेन, गोल्ड बिस्केट, गोल्ड कॉइन. एग्जैक्टली. एक बंदे के पास इनकम टैक्स रेडी करे, पूरा का पूरा गोल्ड निकला. व्हाट डू यू कॉल दिस? अनएक्सप्लेन्ड मनी. एक्सप्लेन कर कहां से आया? वो बोल रहा है ये ना मेरे बर 60% बर. यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबॉडी? देन and the same is not recorded in the books. Amount of investments not fully disclosed. Made investments or found to be owner of any money, bullion, jewelry and other articles, and the amount is recorded at lower than the what value? Actual value. Unexplained what, sir? Example? पेट्रोल डीजल वाला एग्जाम्पल. करेक्ट ना यार? पॉसिबल है ना यार ये सर? स्पीक आउट. नेक्स्ट, amount borrowed or repaid on hundi. Sir, you know something called check? You know something called DD? Technically we call the check and DD as negotiable instruments. Negotiable? We call the check and DD as negotiable instrument. Now hundi is basically a bills of exchange which is drawn in a local language. हुंडी का मतलब जो टेम्पल हुंडी होता है ना वो नहीं है बेटा, अब वो मत समझो. हुंडी इज व्हाट? अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज विच इज ड्रॉन इन व्हाट लैंग्वेज? लोकल लैंग्वेज. फॉर एग्जाम्पल मे बी मराठी और तेलुगु और तमिल. यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबॉडी? सर समथिंग लाइक प्रॉमिसरी नोट. सर आप मेरे से लोन लिए, कुछ प्रॉपर्टी कुछ दे रहे नहीं, मैं तो प्रॉमिसरी नोट तो लिखा होगा ना यार आपसे कि सो एंड सो डेट पे मैं पैसा दूंगा, नहीं दूंगा तो ये प्रॉपर्टी आप ले लो, नहीं दूंगा तो ये ले लो, वो ले लो. नहीं तो आप बोलेंगे सिर्फ भरोसा करो, ट्रस्ट मी, बिलीव मी.
मतलब बहुत डेंजरस वर्ड है वो. So correct है सर. चलो, what is that word? Amount borrowed or repaid on hundi is repaid otherwise through an what check? Account pay check. It should definitely be repaid through account pay check only. Now I'll discuss one interesting concept. आप उसका फर्क क्या है मुझे बोलो, नहीं पता तो मैं ही बोलूंगा. There is something called bearer check, something called cross check, third one called account pay check. ये नाम सुने क्या? क्या मतलब है बेरर चेक का? हाँ, जिसका नाम है वो बंदा जाके पैसे ले सकता है. करेक्ट? बोलो. हाँ, जो चेक होल्डर है, तो चेक के किसका नाम है चेक के ऊपर, वो बंदा जाके लेगा. मतलब मैं आपको चेक दिया, कुछ नाम लिखा ही नहीं तो अलग बात है, जिसके बाद चेक है वो जाके पैसे लेगा. बट आपके नाम लिखा मैंने, आप जाके तो बैंक से पैसे ले सकते हैं ना सर. स्पीक आउट. क्रॉस चेक का मतलब क्या है? अब ये मत बोलो सर 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, अरे वो नहीं है. मतलब वो तो मीनिंग है, बट उसका मतलब क्या है बेसिकली? जिसका नाम लिखेगा उसको ही मिलेगा. बेरर चेक में ऑलरेडी नाम लिख दिया मैंने, समझो. मैं आपको आपका ऑलरेडी नाम लिख के आपको चेक दे दिया, वो चेक गुम गया, उसके हाथ में गया, वो जाके पैसा ले सकता क्या? This is correct answer. In bearer check you can take cash, but in cross check account pay check you can't take cash. Money will go into the bank account. Money will go into what account? Bank account. Sir, in bearer check you can take cash, but in cross check account pay check you can't take cash. Money will only go to what, my dear friends? Bank account. For example, let's say I gave a check to Rahul. नाम तो सुने होंगे ना? हाँ, यही बंदा है. Yeah. Now I gave a check to Rahul. On that check, I just wrote Rahul name and gave it to him. Can he go to the bank and take cash? Speak out. I did not draw the 2 lines. I did not cross the check. Can he go to the bank and take the cash? Yes. Technically, we call it as what check? Bearer check. Beta bolo. Everybody. Situation 2. I wrote his name and I have drawn 2 lines. And in between that 2 lines, I wrote the word account pay. A by C pay. That's what we call it, account pay check. Then money will go only to his bank account. वो कैश नहीं ले सकता काउंटर पे. समझ में आ रहा है सर? अभी लास्ट क्लैरिफिकेशन व्हाट आई हैव टू गिव यू इज क्रॉस चेक में अकाउंट पे चेक में फर्क क्या है? क्रॉस चेक मतलब 2 लाइन ड्रॉ करे तो क्रॉस चेक बोलते हैं, बीच में अकाउंट पे लिखे तो उसको अकाउंट पे चेक बोलते हैं. दैट इज द मीनिंग डिफरेंस इन हाउ इट लुक्स. बट व्हाट इज द टेक्निकल डिफरेंस? लिसन. I gave a check to Rahul on which I have drawn 2 lines and I wrote account pay. Money will go to whose bank account? Rahul's bank account. That check is called technically as account pay check. समझ में आ रहा sir everybody? Sir, I'm not teaching this because I'm interested in law. Law you will learn from law faculty, don't worry. But I'm teaching this because these words will come everywhere in income tax. That time you should not be shocked. You should rock. Clear no? सुनो ध्यान से. What did I say? I gave a check to Rahul and I have drawn 2 lines and I wrote account pay. So money will go to only to the bank account of what? Rahul. Correct, my dear friends? But imagine I gave 1 lakh rupee check to Rahul and I have drawn 2 lines. In between, I did not write account pay check. Then technically we call it as a cross check. Crossed check. Can you withdraw cash? Can you withdraw cash? Withdrawing cash option is only in which check? Bearer check. But Rahul had to pay 1 lakh rupees to Gaurav. Rahul had to pay 1 lakh rupees to Gaurav. राहुल ने क्या किया? जो 1 लाख चेक मैंने राहुल को दिया, he turned the check backside and wrote one word called endorsed. What is that word? Endorsed to Mr. Gaurav. Now money will go to Gaurav's bank account. You're getting my point? Now technical difference between bearer check, cross check, account pay check is that bearer check is a check where money can be withdrawn at the counter. Cross check, money will go to the bank account. Account pay check also money will go to the bank account. But difference is that cross check can be endorsed, but account pay check cannot be endorsed. Endorsed means transferred to somebody. Clear no? अभी पढ़ो ये क्या लिखे ये लोग? Amount what sir? Amount borrowed or repaid on what? Hundi is repaid otherwise than through
अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे चेक से रिपे किया तो ठीक है, अगर अकाउंट पे चेक नहीं दिया तो हम उसको टैक्स लगा देंगे, बिकॉज मालूम नहीं ना वो चेक किसके पास जा रहा है. अगर मैं बेरर चेक दिया वो पैसे कौन उठा रहा है किसको मालूम. अगर मैं अकाउंट पे चेक दिया देन यू कैन नॉट गिव इट टू समवन. नो सर, लॉजिक समझ में आ रहा है सर. सर, इफ आई टेक ए लोन ऑफ 20 lakh फ्रॉम यू, आई हैव टू रीपे दैट 20 lakhs लोन टू यू. I should repay only by account pay check. If I give you cash, it's a violation of me. If I give you bearer check, violation of me. If I give you cross check, I violated. I should give you only what check? Account pay check. गवर्नमेंट का लॉजिक सिंपल है, उनका फंडा इतना ही है, भैया हमको देखना है कि पैसे कहाँ से कहाँ जा रहा है. वो देखने का पॉसिबिलिटी कहाँ पे है, सिर्फ अकाउंट पे चेक. अगर क्रॉस चेक है वो किसको 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 ट्रांसफर कर दिया किसको मालूम. अगर बेरर चेक है जाके कैश ले लिया किसको मालूम कौन दिया. सर, गेटिंग माई पॉइंट. सर, जब बैंक स्टेटमेंट आप देखेंगे ना, अगर मैं 1 लाख का बेरर चेक दिया राहुल को इन माई बैंक अकाउंट, मेरे विथड्रॉस 1 लाख, उसमें बैंक स्टेटमेंट में सिर्फ आता है कैश विथड्रॉवल, दैट्स इट. उसमें राहुल का नाम दिखता ही नहीं है बैंक स्टेटमेंट में. बट इफ आई गिव अकाउंट पे चेक टू राहुल इन बैंक स्टेटमेंट, दे विल शो राहुल, नाम आता है वहां पे. तो ऑफिसर को मालूम पड़ गया ना किसको दिया. अगर तू बेरर चेक देगा तो किसको मालूम या तू किसको दिया. यू आर गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ अस. डन. See here, in all the above cases, if no explanation, if no what sir, or no satisfactory explanation, कुछ तो बोल रहा है but it's not satisfactory. You're getting my point. पेट्रोल डीजल है, बोल रहा है जनरेटर है, जनरेटर लेके आए, पूरा साल में कभी पावर गया ही नहीं तो जनरेटर लाया क्यों. बोल रहा मैंने लेके आया, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा दोस्त भी बोल रहा है लेके आए, तो क्या किया लेके आके. वो बोल रहे पावर गया, पूरे साल में एक बार पावर नहीं गया, तो क्या पागल बना रहे क्या हमको. समझ रहे मेरी बात. So getting my point, we can't just cook the stories with income tax department. They don't listen to all your stories. They want proper evidence. Clear? If no explanation or no satisfactory explanation is provided by the assessee about the nature and the source of such credit or income or whatsoever investment, such amount shall be deemed to be income of what year, sir? And if total income includes any income referred under above section, tax is payable at what rate? 60%, 25%, 4%. Next line देखो. No basic exemption and no deduction shall be allowed in respect of any expenditure or allowance under any provisions of the Act. Last one, no set off or loss against such income. You're getting my point, everybody? Sir, imagine Shiva Teja's house, they have come for income tax raid and they found 50 lakh cash and told भैया 50 लाख पे बर टैक्स 78%. मैं बोल दिया और ये लास्ट ईयर मेरे को बिजनेस लॉस था 20 लाख, वो मैं सेट ऑफ करके 30 लाख पे करता हूँ टैक्स. अलाउड है क्या? स्पीक आउट. सेम लॉजिक लाइक लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग. उधर भी सीधा क्या बोल दिया हम लोग, 30%. कुछ खर्चा कम नहीं कर सकते, कुछ लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते, आपको सीधा वहां पे 30% टैक्स पे करना है. वहां पे तो 30 है, यहाँ पे तो 78 है. गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी. स्पीक आउट. चलो, पुट साइडिंग इन योर बुक, सेक्शन 115 BBE. BBE. What is BB? Betting, gambling, lottery. This is what? BBE. Write down. In case of the following, 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 come on, the rate of tax shall be rate of tax shall be rate of tax shall be what? 60% plus what? Plus surcharge 25% plus what, sir? HEC at 4%.
and the effective rate shall be what? 78%. Effective rate shall be 78%. So clear है? नीचे लिखो number 1. Come on, let's start writing. Number 1. Unexplained cash credits. Unexplained cash credits. Unexplained cash credits. Unexplained cash credit. Bracket section 68. Unexplained cash credit, bracket section 68. Next, number 2. Unexplained investments. Unexplained investments. Unexplained investments. Bracket section 69. Unexplained investment, section 69. Clear? Next, number 3. Unexplained money. Unexplained money, comma, bullion. Unexplained money, comma, bullion, comma, jewelry. Unexplained money, bullion, jewelry, or any other valuable article. Jewelry or any other valuable article. Bracket section 69A. कौन section है बेटा? 69A. Next one. Investments. Investments not fully disclosed. So you got the difference now here. Investment is not fully disclosed. Previous point is investment ने record ही नहीं किया. ये point क्या? Investment is what? Not fully disclosed. 10 करोड़ का asset books में सिर्फ 2 करोड़ दिख रहा है. तो बाकी 8 करोड़ आया कहाँ से? You getting my point? Investment not fully recorded. Bracket section 69B. Next, unexplained expenditure. Unexplained expenditure. Unexplained expenditure. Bracket section 69C. Unexplained expenditure, section 69C. Next, last one. Amount borrowed or repaid on hundi. Amount borrowed or repaid on hundi. Amount borrowed or repaid on hundi is repaid. Amount borrowed or repaid on hundi is repaid otherwise than through. Otherwise than through. Otherwise than through. Otherwise than through an account pay check. Otherwise than through an account pay check. सब लोग क्लियर है? Speak out. Now I'll ask you one question. Think properly and calculate. Mr. X. Which one? 69D. You can see here. 69D. ठीक है ना यार? ये 68, 69 ये सब तो ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है 115 BB, वो इंपॉर्टेंट है. नीचे वाला याद नहीं रखे तो भी चलेगा, बट 115 BB तो याद रखना है. व्हाट इज 115 BB? Casual incomes, betting, gambling, lottery, horse race, big boss, small boss, whatever boss it is. Tax is what rate? Flat 30%.
Unexpected income, investments, money. Flat 60%. 25% surcharge. Cess 4%. Effective rate. Section number 115. BBE. सब क्लियर है? पक्का? चलो बेटा, अभी इसका आंसर दो. मिस्टर एक्स एज 45 years. He has got PGBP income 14 lakhs. Lottery income 10 lakhs. Lottery income 10 lakhs. Total how much? 24 lakhs. Calculate tax. करो कैलकुलेशन. कैसा करते करो. फाइव लाख 32,500. सबका वही आंसर है क्या? गुड. देखते हैं आंसर. बोलो बेटा. चलो. हाउ डू वी कैलकुलेट टैक्स? फर्स्ट, tax on lottery at the rate of 30%. Under which section? 115 BB, which comes to how much, sir? 3 lakhs. Other income, we'll calculate tax at what rates? Slab rate. पता है slab rate अपने को? Other income कितना बेटा? 14 lakhs. So what do we do? To 2.5 lakhs, nil. 2.5 lakh to 5 lakh, 5%. 12,500. करेक्ट ना दोस्तों? चलो नेक्स्ट क्या है दोस्तों? 20%. कितना होगा ये? अबाउट 10 लाख होगा, विच कम्स टू 1,20,000. टोटल क्या है बेटा? 2,32,500. So my total tax will be 5,32,500 plus HEC at the rate of 4%. कैसे बोल सकते हैं आप इसको? ये तो हमेशा आएगा ना अपने साथ. कितना है? 4%. हाँ, 21,000. That's it. 5,53,000. ये हो गया अपना total tax liability. Are you getting clarity on this? So you have to bifurcate lottery, calculate tax separately. For balance, we'll apply what rate? Slab rates. क्लियर है दोस्तों?
I hope you are clear with this concept, everybody. Yes. I'll ask you a next question. Think properly and tell me. Yeah. So what is previous year meaning? Year in which income is earned. Assessment year meaning? Year in which previous year income is chargeable to tax. Now tell me, one person, Mr. X, he started business on 10th August 2022. When did he start the business? 10th August 2022. What will be previous year for him? Tell me guys, what will be previous year for him? 21-22. Previous year क्या है इसका? Previous year is what? 22-23. Correct? No? Speak out. But when I write 22-23, what does 22-23 signify? 1st April 22 to 31st March 23. Correct? No, my dear friends? Law told previous year will be 10th August 22 to 31st March 23. And assessment year will be straight away 23-24. That is 1st April 23 to 31st March 24. So getting clarity? Concept what I am trying to tell you is now, previous year need not always be 12 months. Previous year need not always be, but assessment year is always. That's it. I hope you got the answer. Everybody, put editing special point. लिख लो एक बार. Come on. Previous year. Previous year need not always be. Previous year need not always be. Previous year need not always be. What's there? 12 months. Previous year need not always be 12 months. But assessment year. But assessment year is always 12 months. Previous year need not always be 12 months, but assessment year is always what, sir? That's it. So getting clarity? Come on, take the example, please. Come on, please take the example. Check clear है? Everybody? Is previous year always 12 months? Not necessary. Assessment year? चलो बेटा एक बार अभी ना क्या क्या सेक्शंस खत्म हो गए अगर बोलो पूरा स्टार्टिंग से क्या क्या करें अपन 2-7 हो गया 2-9 हो गया 231 हो गया हाँ सेक्शन 4 हो गया 288A हो गया 288B हो गया 87A हो गया 172 174 174A 175 176 115BB E और कुछ 225A अरे कैसा भूलेंगे यार आप क्या 225A याद है ना India covers what? Territory, territorial waters, continental shelf and exclusive economic zone, seabed and subsoil underlying such water and airspace about territory and territorial waters.
सर डन, एवरीबडी क्लियर विद दिस? और कुछ सेक्शन नंबर करें अपन? हाँ वो छोड़ दो सेक्शन। 10 तो एग्जामिशंस की बात करता है, ठीक है, उसमें बहुत कुछ है। 80 टीटीए भी हो गया ना यार, 80 बाद में, 80 बाद में टीटीए तो हो गया ना। टीटीए क्या? इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट। आई मीन आप पूछ सकते हैं सर टीटीए क्यों लिखे, सी और डी क्यों नहीं लिखे? रीजन आई हैव, बिकॉज टीटीए सिर्फ इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट का ही बात करता है, बट 80C में 10-15 पॉइंट है, उसमें एलआईसी एक पॉइंट है। तो पूरा हो गया क्या अभी? नहीं ना। 80 टीटीए में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ उतना ही बोलता है इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट, वॉट एवर इंटरेस्ट यू गेट, और 10,000 विच एवर इज लोअर, टेक इट एज डिडक्शन। बट फर्स्ट इनकम ले लो, उसके बाद डिडक्शन ले लो। सर बराबर सर? बेटा बोलो, चलो बेटा बोलो अभी, व्हाट इज सेक्शन 27? 172 सीधा बोल दे असेसमेंट ईयर। अरे कंट्रोल यार। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, उसका प्रिजम्पटिव इनकम क्या होगा, क्या परसेंटेज लगाएंगे वो लोग? 7.5%। बोला था मैंने आपको नॉलेज के लिए, याद है ना? हाँ गुड बेटा। 225A, 288A, राउंडिंग ऑफ इनकम, टोटल इनकम। 80 TTA, इंटरेस्ट ऑन, पूरा बोलो, सिर्फ इंटरेस्ट मत बोलो, बहुत फर्क पड़ेगा। हजारों तरीके का इंटरेस्ट आता है, लोन दिए तो इंटरेस्ट आता है, एफडी पे इंटरेस्ट आता है, सेविंग्स बैंक पे इंटरेस्ट आता है, ये सिर्फ बात करता है सेविंग्स बैंक, तो पूरा बोलो। देन 87A, हाँ ओनली फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल। सबसे पहले वो पॉइंट बोलो यार, इट इज ओनली फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल whose total income does not exceed 5 lakhs. How much is rebate? Tax payable at 12,500, whichever is 29, 231, 174A, AOP, BOI, AJP formed for short duration or purpose, 115BB, betting, gambling, lottery, horse race, बोलने का नहीं, क्या रेट है बेटा? 30%, फ्लैट। सीधा फ्लैट का मतलब है कुछ एक्सपेंसेस कम नहीं कर सकते, डिडक्शन कम नहीं कर सकते, लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते, जितना आया उतना 30% पे कर। सी द मीनिंग ऑफ दैट इज व्हाट माय डियर फ्रेंड गौरव, आई विल गिव वन मोर एग्जांपल फॉर यू सिंस यू हैव लिटिल बिट डाउट ऑन दैट, अगेन आई विल गिव वन मोर एग्जांपल। शिवा तेजा वेंट टू लॉटरी, एक बार लॉटरी टिकट खरीद लिया, ठीक है, और लेट्स से आई वेंट टू हॉर्स रेस, आई हैव स्पेंट 2 लाख ऑन वन हॉर्स, 2 लाख बेटिंग ऑन वन हॉर्स, गया 2 लाख, लॉस है ना मेरा? लॉस है ना मेरा? बोलो बेटा। नेक्स्ट टाइम और एक हॉर्स बेट किया, हॉर्स नंबर 5, शिवा तेजा बेटिंग वेटिंग, हॉर्स हैज won and I got 10 lakhs. लॉस कितना हुआ पहले? अभी प्रॉफिट कितना आया? अगर मैं बोलूंगा सेट ऑफ करके 8 लाख पे पे करूंगा, वो बोले चप्पल लेके मारेंगे, 10 लाख पे कर टैक्स। जितना लॉस है तू भूल जा, जितना एक्सपेंडिचर है भूल जा, जितना ग्रॉस इनकम आया चुपचाप टैक्स पे कर। उसका मतलब होता है फ्लैट रेट। समझ गए आप लोग? Nobody can set off that losses. Impossible. याद रख लो ये चीज। Government is very clear on this concept. Clear? Good. 115BB. Unexplained income, investments, expenditure, unexplained cash credit. याद रखना पेट्रोल डीजल। अरे बोलो यार, how can a person have both petrol and diesel for one bike here? How is it possible? You getting my point, everybody? चलो 234. 234. Section 4, 288B, rounding off of 175. Person likely to transfer property to avoid tax. 176, discontinued business. 174, person leaving India permanently or for long time. सर मुझे पता है आप ऑर्डर में पूछेंगे तो 5 फट बोलेंगे, आई नो दैट, आई हैव दैट कॉन्फिडेंस ऑन यू। 4 बार रिवाइज करें तो पक्का आंसर आएगा लाइन में, बट एक बार ऐसा उल्टा सीधा रिवाइज करें ना, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। क्लियर है? अगर अपन कभी रोड पे गए, 174 का बस जा रहा है, हम बोलेंगे पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली और फॉर लॉन्ग टाइम। लोग समझते हैं तो पागल, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने को पता है ना अपने को टैक्स आता है, सब बराबर ना यार, सिंपल। I'm not joking, but let me honestly tell you, when I go in my car, गाना बजाते ना यार, when I play some music in the car, the folder number is 2, मतलब मूवी का नंबर है 2, सॉन्ग नंबर इज 7, वहाँ पे दिख रहा है मेरे को 27, मतलब फोल्डर नंबर 2 है, गाना का नंबर है 7, मेरे दिमाग में आता है ऐसा सी।
आप लोग पागल समझो, कुछ भी समझो, हम ऐसे ही है, टैक्स के अंदर डूब गए, क्या कर सकते हैं अभी? तो समझ में आ रहा है मेरी बात? स्पीक आउट। आज सुबह भी ऐसे हुआ, एक्चुअली मैं सुबह जो ऑटो से आया था, ऑटो बंदे का, ऑटो का प्राइस हुआ 36 रुपीज़, 38 रुपीज़। उसके बाद 40 रुपये दिया मैंने। वो बोला भैया 2 रुपये, वो बोला सर छुट्टा चेंज नहीं है, छुट्टा नहीं है, एडजस्ट कर लो, राउंड ऑफ समझ लो। 288 ए, 288 बी, आ गया ना यार? Rounding off of income, rounding off of tax. See, I'm only trying to tell you that when you start loving it, when you start looking at it that way, you'll automatically remember everything. ऐसा कुछ नहीं हो सकता करके 100% हो सकता है यार, वो मेरी गारंटी है। अपन 4 दिन 10 दिन साथ में बैठने वाले नहीं है, 2 महीने चलने वाले हम लोग, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ आएगा ना यार। क्लियर है? चलो बोलो नेक्स्ट, सेक्शन 3। इनको एक बार क्लास लेना पड़ेगा। सेक्शन 10, एग्जाम्पशंस। अगर ये भूल गए तो भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं है अभी के लिए, बिकॉज उसमें पढ़ना बाकी है अभी। 10(1) क्या है, 10(2) क्या है, पूरा पढ़ना है, जब पढ़ेंगे तब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सर क्लियर है यहाँ तक? पक्का? मैं 3 क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग बराबर आंसर लेके आना मेरे लिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर ए, एज 64, इनकम इज 64 lakh. Question number 2, Mr. B, age 32, income is 8,80,000. Question number 3, Mr. Ping Pong, क्या नाम है उसका बेटा? A non-resident, a what resident? Age 32, income is 3,20,000. कितना इनकम बेटा? 3,20,000. चलो बेटा, हो गया मैडम आपका आंसर? तो आप कर रहे क्यों नहीं? अच्छा वेट कर रहे, सब आंसर बोलेंगे, फिर मैं कंफर्म करूंगा वो सही है नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? अरे होमवर्क नहीं, क्लास वर्क है। पहले दिन में इतने क्लासेस है, अभी क्या होमवर्क दूं आपको मैं? स्टार्टिंग में क्यों ऐसा, देखेंगे बाद में। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन? बोला बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बेटा? 19 lakhs 70
120. How many of you got same answer? Good. Majority of them. लगता है करेक्ट ही है. 1979 120 वही आया क्या? सुपर. हो गया आज का खाना. पेट भर गया ना अभी? First question, check your answer, please. It is 19,79,120. I did not calculate, but majority of them told me same answer, so I'm presuming that it is correct. आप सरचार्ज लिए क्या? कितना % लिए? हाँ, गुड. शार्प हो गए. नाइस. कल आपको बताऊंगा स्पेशल केसेस क्या है सरचार्ज में. ठीक है. अभी तक जो पढ़े हम नॉर्मल सरचार्ज केसेस, कल स्पेशल केसेस भी पढ़ेंगे हम लोग. उसके ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं. दोस्त हो गया आपका? हो गया? सेकंड क्वेश्चन क्या है आंसर? आप कैलकुलेटर पे करके छोड़ दिए क्या? बुक में कीजिए ना. हो गया सेकंड? क्या है आंसर? सेम. 2 लाख. अरे 2 लाख तो हो ही नहीं सकता. 10 लाख तक की आता है 1,25,000, 1,12,500. 92,000. सो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग अप टू 3 लाख नहीं लिए ना, या अप टू 2.5 लाख नहीं लिए आप लोग? 3 लाख ही लिए ना, तो बराबर ही ना आंसर तो ये. हाँ ठीक है. सेकंड क्वेश्चन सर, अब लॉजिक अप्लाई करो सर. 2.5 लाख तक तो जीरो है. 2.5 से 5 लाख कितना है? 12,500. 5 लाख 10 लाख तक कितना है? लाख रुपए. लाख रुपए 12,500 कितना होता है? 1,12,500. तो 2 लाख के ऊपर टैक्स आ ही कैसे सकता है जब 10 लाख के अंदर है इनकम? बराबर ना यार. 10 लाख तक की टैक्स है 1,12,500, तो 2 लाख के ऊपर आने का स्कोप ही नहीं है. तो सीधा का सीधा दिख रहा है वहां पे कुछ गलत हो गया. दया कुछ तो हाँ गड़बड़ है. दोस्तों हो गया सेम आंसर? गुड. हाँ वो यार हो तीसरा. हाँ हो गया. चलो बेटा थर्ड क्वेश्चन आंसर. $24,000 हो ही नहीं सकता हूँ. 7.5% क्या है? अरे वो शिपिंग बिजनेस का है. इधर मैं शिपिंग बिजनेस बोला क्या? आंसर इज 3,640. दैट्स इट. बच्चा बोल रहा है सर टैक्स नहीं होना चाहिए ना. क्या है रिबेट अंडर 87A? Rebate under 87A is only for resident individual, and the gentleman is a non-resident. When he is a non-resident, there is no question of rebate. Up to 2.5 lakh, nil. 2.5 to 320, 70,000, 5%, 3,500, 4% cess. It comes to 3,640. और कोई बंदा कुछ सोचा है 7.5% बारे में. वो सिर्फ शिपिंग बिजनेस का है दोस्त. मैंने कुछ बोला नहीं ना ऐसा, तो शिपिंग बिजनेस करके तो आप 7.5 अप्लाई मत करो. वो क्वेश्चन में क्लियरली बताएगा साफ साफ कि शिपिंग बिजनेस है या नहीं है. और 7.5% जो है ना वो भी टैक्स नहीं है, वो इनकम कैलकुलेट करने के लिए है. जो टर्नओवर रहेगा ना, टर्नओवर पे 7.5% उसका इनकम बनेगा, वो टैक्स नहीं है. समझ में आ रहा है दोस्त? अगर उसका टर्नओवर 10 करोड़ है, उसका 7.5% उसका इनकम बनेगा, वो इनकम पे वो टैक्स पे करेगा. क्लियर है? आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ अस. हमने सोचा रिबेट आएगा आएगा, हुआ क्या? रिबेट आया नहीं. क्यों नहीं आया रिबेट? रिबेट कॉन्सेप्ट इज ओनली फॉर रेजिडेंट. एग्जैक्टली सर, क्लियर है एवरीबॉडी?
कैन आई प्रोसीड? श्योर? नीचे क्वेश्चन लिखो सर. What would be your answer? What would be your answer? What would be your answer? What would be your answer if ping pong is a non-resident, resident नहीं है, resident तो आप सीधा बोल देंगे सर टैक्स जीरो, पता है मुझे आप बोलेंगे वो, is a non-resident age 62. एज कितना बेटा? हाँ बोलो क्या आंसर? नीला. नील क्यों आएगा मैडम? बोलो 10 हो गया आंसर? बोलो यार. व्हाट इज आंसर? 10. बट दैट इज अ रॉन्ग आंसर. आई टेल यू भाई, सम कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए आपको ये क्वेश्चन दिया जो मैं पढ़ा ही नहीं. मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा क्योंकि बिकॉज आई डेंट टीच यू दैट कॉन्सेप्ट. व्हाट आई वांट टू टेल यू इज आंसर इज स्टिल 3640 बिकॉज फॉर नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल irrespective of age he will come under first category only. what is first category? normal. अगर वो सीनियर है तभी भी नॉर्मल में जाएगा, सुपर सीनियर है तभी भी नॉर्मल अप्लाई करेंगे हम. क्लियर है सर? अभी लिखो आंसर. tax remains same. Tax remains same, that is 3640. Tax remains same, that is 3640. Since non-resident individual irrespective of age, will always be covered under क्या बेटा? नॉर्मल कैटेगरी ओनली. बट उसको रिबेट आएगा क्या बेटा? नो, बिकॉज रिबेट इज ओनली फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल whose total income does not exceed 5 lakhs. How much is rebate? Tax payable at 12,500, whichever is exactly. सर क्लियर है एवरीबडी? चलो यार एक छोटा सा ब्रेक लेते 2 मिनट फॉर अस टू वॉच आउट सम इंटरेस्टिंग वीडियो. देखते हैं इसका कहानी क्या है. देखो मस्त नॉलेज आएगा आपकी इस वीडियो से. आर यू इंटरेस्टेड टू वॉच और नॉट इंटरेस्टेड? देखना है? अच्छा बोल रहे यार वेट कर रहे हैं तब से, बताओ अभी. चलो सी बेसिकली दिस वीडियो टॉक्स अबाउट व्हाट इफ टैक्स इज ए पर्सन. अगर टैक्स कोई आदमी होता है तो क्या होता है? समझ रहे आप मेरी बात? बेटा बोलो. चलो देखो क्या होता है. एक्सक्यूज मी, हेलो. बाप का माल है क्या आपका? कहाँ लेके जा रहे हैं? बाप का हो या आपका हो, हमें 1 घंटा फर्क नहीं पड़ता. हम तो बस अपना हिस्सा लेने आ गए. कौन सा हिस्सा है? कौन तू? मैं हूँ टैक्स, नाम तो सुना ही होगा. डोंट माइंड, बस आपकी कमाई खाने आ जाते हैं, बचा हुआ आप एंजॉय करें. उसमें एक लाइन समझ गया क्या आप? पैसा आपका हो बाप का हो किसी का लेना देना है नहीं, हम तो टैक्स लेते ही लेते हैं. सर क्लियर है? हर सीन में एक कॉन्सेप्ट है सर, हर सीन में एक कॉन्सेप्ट है. ये तो गरीब है. वे सुन, ये क्या हरामीपन मचा रखा है बे तूने? ये देखो यार मस्त है सीन. तुमको कैसे पता कि हम हरामीपन मचा रहे हैं? बड़े सब पता है हमें, ठीक है? साले हम दोनों दोस्त हैं.
एक ही पोजीशन पे काम करते हैं तो हमारा अलग अलग टैक्स क्यों कटता है? जिसकी जैसी तनख्वाह उसका वैसा टैक्स, सिंपल। ऐसे कैसे? तूने उससे तो 3,000 रुपए लिए और मेरे से 4,000। चल क्या रही है? एक तो साले तेरे तो 1,000 रुपए कम गए ना, तो तू तो चुप रहे, उसके चक्कर में अपने क्यों मरवा रहा है? चुप रहे। हमको बांटने की कोशिश कर रहा है और तू चपड़ चपड़ ना थोड़ी कम कर। ये बता कि अलग अलग टैक्स क्यों काट रहा है? अरे क्योंकि इसने मेडिक्लेम लिया हुआ है। ये नकली रेंट रिसिप्ट देता है जो आप नहीं देते हो। ये अपना पैसा ऐसे सेविंग्स अकाउंट में जमा करके नहीं रखता, पीपीएफ में डिपॉजिट करता है। इसलिए इसको हर साल की इन्वेस्टमेंट के बदले 80 के अंदर डिडक्शन मिल जाती है। आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपको नहीं मिलती, सिंपल। तो सैलरी तो सेम है ना। पर इन्वेस्टमेंट तो डिफरेंट है ना। पर इनकम टैक्स तो इनकम पे काटना। नहीं नहीं, देखो इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए ना इन्वेस्टमेंट चाहिए। कितना कॉम्प्लिकेटेड है यार। अरे क्योंकि मैं टैक्स हूं, बिल में आता हूं, समझ में नहीं। ये फोटो देख रहा है कितना क्यूट लग रहा हूँ। बेटा लड़कियां मेरे को टैक्स बुलाती थी। ये कब की फोटो है? नर्सरी की? अबे नहीं, पिछले साल की। एक साल में इतना बढ़ गया तुम? तो भाई हम इंसान नहीं है, हम टैक्स हैं। जितना मन करता है सरकार का बढ़ा देती है। हमारी ग्रोथ होती है बेटा बिना कॉम्प्लेन पिए। सही है यार। So yeah, जयपुर ट्रिप इज फाइनल राइट? हाँ डन। कितना पड़ेगा पर हेड? रहना खाना लाइक छोटी मोटी शॉपिंग प्लस ट्रैवल को मिला के अबाउट 3,000 समथिंग लाइक दैट। Great works. वर्क्स राइट? Yeah, या great. परफेक्ट। अच्छा, ट्रिप प्लान हो रही है और मेरे बिना। मेरा हिस्सा कौन काउंट करेगा भाई? रोड पे जैसे ही निकलोगे ना, सबसे पहले टोल टैक्स देना पड़ेगा और उसके बाद जहाँ के जिस होटल में रुकोगे वहां पे भी टैक्स देना पड़ेगा। जो खाओगे उस पे टैक्स होगा, जो पियोगे उस पे टैक्स होगा। अगर किसी टूरिस्ट साइट पे भी जाएगा ना तो टिकट तो लेनी पड़ेगी, उसमें भी टैक्स होता है। यस, करा दी एक और ट्रिप कैंसल। भाई मेरा टैक्स कितना पड़ेगा इस साल? ये मैं तुझे नहीं बताऊंगा, तू मुझे बताएगा। अगर मैंने तेरे को कम बता दिया फिर? फिर तेरे पास नोटिस आएगा और तू जितना कम बताएगा वो एक्स्ट्रा तेरे से वसूला जाएगा। फिर तू ही बता देना कितना टैक्स है मेरा। नहीं, मैं अभी नहीं बताऊंगा, जब कम रह जाएगा तब बताऊंगा। मैं घूर क्या रहा है? फिर साले तुम ना मेरी जिंदगी का शनि बन के बैठे हो। अबे पता ही नहीं चलता कब कितना टैक्स भरना है, कहाँ भरना है, हैं? यार अगर मेरी टैक्स लायबिलिटी है तो तुम बता दो ना, मेरी टैक्स लायबिलिटी मैं भर दूंगा। पर नहीं, वो तुम क्यों बताओगे? वो तो मुझे सीए बताएगा और वो सीए बताने के अलग पैसे काटेगा। और अगर मैंने कम भर दिया तो तुम मुझे नोटिस भेज दोगे। नहीं, अगर कभी आपने एक्स्ट्रा भरा है तो आपका वापस भी तो आता है। आता है ना? जब रिटर्न भरो तो उसके लिए टैक्स अलग से भरो। तो स्कूल में हमको पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों कराते हैं? कम से कम टैक्स फाइल करना ही सिखा दो तो पता तो चले कि सैलरी कितनी आती है। भाई इनकम पे अलग से टैक्स भरो, बाहर चाउमीन खाने जाओ उस पे अलग से टैक्स भरो, मैगी पे टैक्स भरो, दारू पे टैक्स भरो, गाड़ी चलाओ उस पे टैक्स भरो, हाईवे पे जाओ उस पे टैक्स भरो। है अबे कमाते क्यों हैं हम? पेट पालने के लिए कमाते हैं कि तुम्हारा टैक्स देने के लिए? बोलने पे भी टैक्स लगना चाहिए, बहुत बोलते हो। आई थिंक दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस सर। अभी आपको ये वीडियो समझ में आया सर? मैं पहले दिखाने वाला था एक्चुअली 1-2 दिन पहले, पर मैंने सोचा थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट कवर करते हैं फिर देखेंगे तब मजा आएगा। उसमें आप ऑब्जर्व करें कि दोनों का सैलरी सेम है बट जो टैक्स कट रहा है दोनों का अलग अलग कट रहा है, बिकॉज इसका इन्वेस्टमेंट है उसका इन्वेस्टमेंट है नहीं। समझ में आ रहा है? और उल्टा ऑफिसर ने अब उससे टैक्स ऑफिसर से क्या पूछ रहा है, तू बता ना मैं कितना टैक्स पे करूँ। वो क्या बोल रहा है, हम नहीं बताते, तू टैक्स पे कर, अगर कम है तो तेरे से वापस लेते हैं, ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, रिफंड देंगे। सुना आपने वो डायलॉग सर? So that is what I keep saying always, that every walk of your life, every step you take, there is a tax. You come to a class, there is a tax. You want to eat some food, there is a tax. You want to go out, there is a toll tax. You want to buy a car, there is a tax. There is something called local body tax, what not. हर चीज में टैक्स होता है, हर चीज में टैक्स होता है और बंदे के पास कोई ऑप्शन होता नहीं है। क्लियर सी बात है? So getting my point? अब आदमी करूँ तो क्या करूँ? सिर्फ टैक्स भरो और जियो, जो बच गया बाकी कुछ बचाने तो मर जा, क्या प्रॉब्लम है? मरने पे तो टैक्स है नहीं, बट जो टैक्स तू पेंडिंग है, जो तू मर गया, तेरे बेटे से पूछेंगे हम टैक्स पे करने के लिए। समझ रहे बात? So getting my point everybody? So tax is one such thing, wherever we go, whatever activity we do, that keeps haunting us everywhere. Clear friends? But this income tax is something very wonderful where any person earns an income, आप और एक डायलॉग ऑब्जर्व करेंगे वहां पे, अगर मैं टैक्स नहीं भरा तो क्या होगा? देखे आप, नोटिस आएगा और हम पकड़ेंगे इंटरेस्ट के साथ। वेरी मीनिंगफुल वीडियो, यू नो, विच गिव्स लॉट ऑफ इनसाइट व्हाट विल हैपन। क्लियर एवरीबॉडी? डन गाइस, कम ऑन टेल मी गाइस, बोलो अभी इंडिविजुअल का टैक्स रेट क्या है बेटा?
up to 2.5 lakhs, nil. 2.5 up to 5 lakh, 5%. 5 to 10, about 10, 30%. Senior, up to 3 lakh, nil. Super senior, up to 5 lakh, nil. सरचार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर है? 10, 15, 25 और 37% क्लियर है ना सर? और वो नॉर्मल रेट ऑफ सरचार्ज है, स्पेशल रेट भी है जो मैं कल बताऊंगा आपको, डोंट वरी. 115 बीबी, बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी. टैक्स रेट क्या है बेटा? फ्लैट 30%. हाँ डन एग्जैक्टली. देन 115 बीबी ई. ओके. अनएक्सप्लेन्ड इनकम, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट, ये सब पे कितना टैक्स लगेगा बेटा? 78%. 60% बेसिक रेट है, 25% सरचार्ज है, 4% सेस है, पूरा मिला के होगा इफेक्टिव रेट 78%. समझ में आ रहा है सबको बात? सब लोग क्लियर है इस बात पे? 100%. वन लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, देन आई विल क्लोज दिस. इन केस ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म और व्हाट सर? LLP और लोकल अथॉरिटी, इनका केस हम डिस्कस करते हैं आज. सिंपल है, 2 मिनट में हो जाएगा तो कंप्लीट करते हैं. कंपनीज का वो सब कल बात करेंगे हम लोग, ठीक है? सो इन केस ऑफ फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी, टैक्स रेट इज 30%. सीधा 30%. प्रॉफिट पे फ्लैट रेट नहीं है, जितना इनकम आया खर्चा कम करो, बाकी पे ही कितना परसेंट है? इसको स्लैब रेट है क्या? स्लैब रेट सिर्फ किसके लिए? स्लैब रेट इज ओनली फॉर इंडिविजुअल. इसको सीधा क्या रेट है? 30%. इन केस ऑफ फर्म्स, LLPs, लोकल अथॉरिटी. एंड फॉर दीज पीपल ऑल्सो there is a concept of surcharge which says if total income is more than 1 crore, how much sir? Then the rate of surcharge is 12%. Straight away क्या रेट है बेटा? 12%. Are we getting clarity everybody? यहाँ पे है क्या 10, 15, 25, 37 ये सब है क्या? बोलो बेटा. that is only for what? Individual. That to normal cases. Special cases we'll talk separately. Are we clear everybody? Speak out. That's it. ये लिखो फिर निकलते. हो गया आज का. स्लैब रेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसको. हाँ, 2.5 लाख, 2.5 to 5, उसका मीनिंग है स्लैब रेट. 2.5 लाख तक 0, 2.5 से 5 इतना, 5 से 10 इतना पढ़े ना हम लोग, वो स्लैब से हो गया ना. इतना तक है तो इतना, इतना तक है तो इतना. दैट इज कॉल्ड स्लैब रेट. हो गया? That's it. That's all for today. Thank you so much. Balance will take for tomorrow. And tomorrow we'll complete फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट. और टाइम भी बचेगा, अगर बच गया तो विल स्टार्ट सेकंड, नहीं बचा तो परसों देख लेते. ठीक है ना दोस्तों? सर बेसिक कॉन्सेप्ट से पक्का पक्का क्वेश्चन आता है, कोई डाउट नहीं है उसमें, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बाकी है जो हम डिस्कस करेंगे. अगर आपके पास मटेरियल भी है तो ईजी रहेगा. कल थोड़ा पॉइंट्स कम लिखना पड़ेगा, अंडरलाइन करते जाएंगे थोड़े. ठीक है ना सर? डन. थैंक यू सो मच. मिलते हैं कल. बाय बाय.